Good evening to all the students. We are back again with Learning CA Inter FM. We started with the chapter of management of working capital. In our previous two classes for management of working capital, we learned different concepts, different topics. हमने स्टार्ट किया था टू लर्न हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल दैट योर बिजनेस रिक्वायर्स. ठीक है, उसका डिटेल में हमने फॉर्मेट सीखा था. To fill up the values in the format, we learned the format of cost sheet, cost summary, income statement. फिर we also in detail learn what is the concept of working capital operating cycle. Time taken for cash to get converted into cash, that is operating cycle का period. ठीक है, we also learn once the amount capital is estimated, from which sources the company should finance that. तो फाइनेंशियल स्कॉलर्स का कुछ जनरल ओपिनियन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई द वर्किंग कैपिटल वेदर इट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. परमानेंट working capital you should raise from long term sources. Temporary working capital needed for seasonal time should be raised from short term sources. But again, this was just a general view, rational view of finance scholars. Actual mein practically depends on companies different factors as well. Then we started in learning the specific components of working capital. हमने करंट असेट के स्पेसिफिक कंपोनेंट से स्टार्ट किया था. In our previous session, we started with a subtopic called receivables management. And I've told you that under receivables management, basically there are only two learning objectives. One is evaluation of different credit policies and selecting the best one. ठीक है, what credit period should company give to its customers? क्या 30 days credit देना is the best fit for the company? 60 days is the best, 45 days is the best, 15 days is the best? Which best credit period the company should grant? So उसके लिए we learned sir, उसके लिए net benefit calculate करना पड़ेगा. So we learned that with credit sales there are some gross benefits. Credit sales के अपने कुछ फायदे हैं, but credit sales comes with some risk cost. And those risk costs were nothing but ABCD, COCD, admin, bad debts, collection, discounting, and COCD is cost of carrying debtors. ठीक है, फिर हमने how to calculate the net benefit का format, that also we learned in our previous class. It is nothing but gross benefit less all the cost. ठीक है, you get net benefit before tax, टैक्स माइनस करो तो नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स. हमने जस्ट फॉर्मेट देखा था. वी हैव नॉट सॉल्व्ड एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन आवर प्रीवियस क्लास. वी वुड बी सॉल्विंग दैट इन टुडेज सेशन. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सीओसीडी मींस. कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ऑफ सीओसीडी. कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स, डेटर्स को कस्टमर्स को उठाने का खर्चा इज कॉल्ड एज सीओसीडी. टेक्निकली इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज opportunity cost of investment in debtors. So either you call it as COCD or either you term it as opportunity cost of investment in. The meanings are same. ठीक है? Now what does this mean? Let's take a practical example. ठीक है? Let's take a small illustration. So let's say my sales in the entire year is 12 lakh. ठीक है? And the current credit period that I give to my customers, the average collection period from customers is 30 days. Assuming 360 days in a year.
So first of all, can you all tell me what would be the amount of my debtors if sales amount is given and if average collection period is given? Can I say we have already learned in estimation of working capital that debtors is nothing but sales, sales में credit sales into ACP divide by 360, correct? Assuming all the sales are on credit. All the sales are on credit. So 12 lakh into 30 divided by 360. Okay. So my debtors comes to, I guess, 1 lakh. 12 into 30 divided by 360. Yes, 1 lakh. Now, how to interpret this 1 lakh? Can I say this is the value of debtors? A debtors means आज मैंने सेल किया of worth rupees 1 lakh. इसका payment I will receive after 30 days. That's why they are called as debtors. The amount is receivable. This is the worth of goods that you have sold. Okay, this is the worth of value that you have sold to your customers. Means, can I say in other words, this 1 lakh is getting blocked in your business for 30 days? Yes or no? As you sold the goods worth valuing 1 lakh. The payment you will receive after 30 days. So can I say for 30 days, I will not receive this amount? In other words, this amount gets blocked in my business. Hey, but for smooth functioning, for smooth running of my business, I cannot afford even a single rupee to get blocked in my business. Otherwise, आपका business ही अटक जाएगा. If even a single rupee is blocked in your business, your entire business flow आगे का अटक जाएगा. So even a single rupee blocked in the business, you cannot afford that. But sir, here you don't have any option. आज आपने 1 लाख का सेल किया, डेटर्स 30 दिन के पहले पैसे नहीं आएगा. मीन्स आप मान के ही चलो that 30 days your amount will be blocked. Hey, but on the counter side, I'm saying no, no, no. I cannot afford this to get blocked even for a 1 day. I need this 1 lakh in my business for smooth running, for smooth production, for smooth business operations. So what option I have now? First option, sir, तो फिर डेटर्स को कोई क्रेडिट मत दो फिर. This is one option. Yes or no? Creditors को कोई क्रेडिट मत दो. But if we don't give credit to debtors as per industry norms, can I say no one will do business with me? So I am saying no, वो नहीं परवड़ेगा मुझे. मुझे धंधा तो करना है. I want to do business. तो सर फिर वेट करो, ब्लॉक होने दो 30 दिन के लिए पैसा. नहीं, बट मुझे वो भी नहीं चाहिए. तो कैन आई से नाउ द ओनली ऑप्शन इज आइदर I should borrow, either I should borrow rupees 1 lakh for 30 days. ठीक है? And let's say the rate of interest of borrowing, let's say for the time being, ROI is 10%. ठीक है? Rate of interest is 10%. So can I say one option is, sir, फिर you borrow this 1 lakh for 30 days at 10%, or another option, can I say I will invest my own funds if I have 1 lakh. yes or no? अगर मेरे खुद के पास 1 लाख रुपीस पड़े कहीं और इन्वेस्टेड है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट तोड़ इन्वेस्टमेंट, I will bring that 1 lakh into this business for 30 days. Yes or no? So can I say if I borrow the funds, I have to pay interest? That interest expense is called as COCD. Are you following, everyone? Acha, if you are not borrowing, you are bringing your own funds of rupees 1 lakh for 30 days. So can I say now you will lose some opportunity income because ये 1 lakh अगर आप ये business में नहीं डालते, if you would have not brought this 1 lakh in this business, it would have been invested somewhere else. From that somewhere else, you would have some rate of interest, opportunity return, opportunity income. So that is lost now.
Are you understanding? So assuming that same ROI for opportunity cost as well, can I say 1 lakh pay? Your opportunity loss in income is 10%. Understood? And this is called as opportunity cost in investment in debtors. ठीक है? ये opportunity loss क्यों हो रहा है? Because I have to invest this 1 lakh in debtors. Debtors मुझे पैसे नहीं दे रहे for 30 days. Can I say my amount is blocked in that debtors? So उसको उठाने का खर्चा, उसको साथ ले जाने का खर्चा मुझे 10% में पड़ रहा है. Understood? So either you term it as COCD, cost of carrying debtors, or either you term it as opportunity cost of investment in debtors. ठीक है? So if it is your own firm, own funds, we generally term it as opportunity cost in debtors. ठीक है? And if it is borrowed funds, we generally call it as COCD. But in examination, these both terms are interchangeably used. ना? ठीक है? Both them मतलब दोनों का एक ही है कि to bring the amount blocked in debtors, either you can borrow from outside or either you can bring your own funds. The rate of interest on these funds will be COCD or opportunity cost in debtors. ठीक है? So मतलब तो समझ लिया सर. We understood what is COCD or opportunity cost of investment in debtors. But how to find the amount? हम जब फॉर्मेट बनाते हैं COCD का, COCD format. Here we will subtract some value. So how to derive the value of COCD? So to calculate COCD, there are two steps that you need to follow. दो स्टेप आपको फॉलो करने. स्टेप वन, calculate the amount of debtors. Because first you would want to know कि भाई debtors में amount कितना blocked है. Are you following? First, you know how much amount is blocked in your debtors, and accordingly you will arrange the funds. Na? So first step is step one, and this step is to calculate COCD. ठीक है? COCD बोलो या opportunity cost of investment in debtors बोलो, they both mean same. So for the sake of simplicity, I will use a uniform terminology of COCD, cost of carrying debtors. So step one is calculate the amount of debtors. ठीक है? So in our present example, can I say debtors was calculated using the following formula: credit sales into ACP divided by 360. ठीक है? But now someone will raise question, sir, this credit sales amount includes profit as well. ठीक है? So profit is always something over and above your cost. The actual amount blocked in debtors, can I say it would be the cost of sales and not the sales figure? Are you following? Because sales figure includes the element of profit. So we cannot call term that profit is blocked. Are you following? Profit is something over and above your cost. The actual amount that is blocked is your cost of sales. Are you following? So here we will value debtors not on credit sales, but again using the same concept that we followed in cash cost basis, we will value debtors on cost of sales. ठीक है? So debtors is equal to cost of sales into ACP divided by 360, 12, 52. And 360 days, 365 days can be interchangeably used. Just read the question, what they have mentioned in the question. Okay? Everyone, so step one, we calculated the actual amount blocked in debtors. So we know, sir, actual amount blocked in debtors is not the sales value, because sales includes profit as well. And you cannot term that कि profit में पैसा block हुआ है. No. पैसा block किस में होता है? The cost that you have incurred from your pocket. Following, so debtors to be valued on cost of sales. Step one done. Step two, once you calculate the amount of debtors, that is the amount blocked in the business, that is the amount that you want to raise. Correct? So step two, apply the COCD rate of interest given in the question.
COCD ROI percentage given in the question. ठीक है? So it is nothing but debtors into COCD percent. Clear? In our present case, in our present example, where I have valued debtors on sales. Now let me just twist थोड़ा सा twist लाता हूँ. Let me take my cost of sales as 80%. ठीक है? So can I say now debtors will not be based on sales, but it will be based on cost of sales. So can I say 12 lakh ka 80% will be my cost of sales into 30 by 360. I will get the amount of debtors. So 960. So 9,60,000 into 30 by 360. 80,000 is the amount blocked in debtors. ठीक है? पहले जो 1 lakh आ रहा था ना, now the actual cost blocked is 80,000. That difference of 20,000 was profit that you want to earn from your debtors. ठीक है? So step 1 clear. 80,000 is the amount blocked in debtors. Yes or no? This is the funding that I want. I have to bring into the business for smooth running of my business operations. Okay. So let's assume I borrow this 80,000 at 10% rate of interest. Okay. At 10% ROI. So can I say my interest COCD cost would be 80,000 into 10%. 8,000 rupees. Understood everyone? So this is my amount of COCD or opportunity cost of investment in debtors. Understood? So this is how you follow two-step process to calculate in debtors. अब इसमें है ना कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है, सर हमारा पैसा तो 30 दिन के लिए ब्लॉक हुआ है, करेक्ट? बिकॉज आफ्टर 30 days debtors will make the payment of 1 lakh. So can I say our amount is blocked only for 30 days? तो सर आपने तो यहाँ 10% जो रेट अप्लाई किया है वो तो पर एनम है. So ideally it should be something like this, 80,000 into 10%. But since we are availing the funding for 30 days, proportionate interest should be levied. Yes or no? So many students have this doubt, but I'm saying no, your doubt is incorrect. The final answer would be 8,000 rupees of interest for the entire year. यही आएगा, यही आएगा. Now let me explain this through a very rational in a layman terms. ठीक है? समझ जाएगा. See, ये doubt समझा क्या है? The doubt that student comes up is, sir, amount block तो 30 दिन के लिए हुआ है, तो ब्याज भी the interest should be levied for 30 days only. But here you have applied for entire year. ठीक है? So why, sir? ऐसा क्यों? So let me explain कि ये 8,000 है ना, this is per annum amount. ठीक है? And our entire calculations in receivables management will be पर एनम बेसिस, ऑन एनुअल बेसिस. हमारे सारे कैलकुलेशन हमें एनुअल बेसिस करने. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, इन अ वेरी रैशनल टर्म्स. सो लेट्स से माय सेल्स इन द एंटायर ईयर, सेल्स इन द एंटायर ईयर, हाँ, पूरे साल का सेल्स, लेट्स से 12 lakh. So can I say all activities accrue evenly throughout the year? Means Jan में sale would be 1 lakh. Likewise, Feb में sales would be 1 lakh. March में, if you would see my sales, if you would see my income statement of March, you will see 1 lakh. And likewise for all the other months till, let's say, December. Okay? So total comes to 12 lakh. Correct? All activities accrue evenly throughout the year. Now let's just focus on Jan month. Jan month में जो होगा वो same story will repeat for all the months. So if you understand the story of any one month, the same story will repeat आगे के महीने में. ठीक है? Because all activities accrue evenly throughout the year. So let's say on Jan 1, on 1st of Jan, I sold the goods worth rupees 1 lakh.
ठीक है, टू माय कस्टमर मिस्टर एक्स and the days credit period is 30 days. Clear? So can I see a 1 lakh ka payment I will receive on Jan 31st? Yes or no? So this is sales ka date. This is payment received ka date. ठीक है, the date on which I will receive the payment. So can I say ideally from Jan 1 till Jan 30 my amount is getting blocked in debtors because आज worth 1 lakh I sold the goods. ठीक है, but he is making the payment after 30 days. So my amount is getting blocked for 30 days. Now for smooth running, for smooth functioning of business operations, I cannot afford the amount to get blocked even for a single day. ठीक है, एक दिन के लिए भी पैसा ब्लॉक हो तो नुकसान हो जाएगा. My आगे का business flow will not work smoothly. So what I did, I raised this 1 lakh. I raised this 1 lakh by taking a loan. ठीक है, at let's say 10%. And can I say 30 दिन बाद तो पेमेंट आने ही वाला है. So I took a borrowing, a short-term borrowing for 30 days. A clear everyone? Because 30 दिन बाद पेमेंट आने वाला है. So after 30 days, I will get the amount from debtors. I will repay the borrowing principal amount. Are you following? So I took a borrowing of 1 lakh at 10% for 30 days. Story clear till here? Now I want to calculate the interest amount on this borrowing. So can I say interest that I will pay for the month of Jan? Can I say it would be 1 lakh ka borrowing at 10% into 30 days because I borrowed for 30 days. Yes or no? So 1 lakh into 10% into 30 divided by 360. 833.333 rupees of interest I need to pay. Correct? And this is specifically for Jan month. Can I say if the same story repeats for all the month? Feb maybe my interest expense would be 833.333. Likewise, if you see March ka income statement, you will see another interest in March 833.333 and so on till December. Are you following? So पूरे साल का interest expense would be 10,000 rupees. Understood? Sir, हमारा तो 8,000 आ रहा था ना ऊपर. ये 8,000 was because here I've taken sales amount. If I take cost of sales amount, can I say this instead of sales will be 80,000? Yes or no? Cost of sales is 80,000. Correct? So I will borrow 80,000 from the bank for 30 days in Jan month. So 80,000 into 10% for 30 days. Can I say 666.67 आया? 666.667. So for all the months, see, Jan में you will receive the amount 1 lakh rupees on 31st Jan. But again on 1st of Feb, new sales is happening. Are you following? So can I say again this will get blocked for 30 days? So again I have to take a borrowing in Feb for 30 days at 10%. Correct? फिर Feb 28 को that payment will be received. Oh, nice! I received the payment. Yay! But again, 1st March को new sales of 1 lakh. Again, amount getting blocked for 30 days. Again, new borrowing. So can I say जो story Jan में हो रही है, same episode, same story will repeat for all the months? Yes or no? If the same story repeats for all the months, can I say every month interest amount I have to pay of 666.67? Correct? So in the entire 12-month period, can I say my total interest would be rupees 8,000? Correct? पूरे साल का मैं interest देखूं तो वो 8,000 होगा. So that is what I have calculated over here. 8,000 rupees. Can you see? So this was a shortcut way, direct way to find this 8,000. But उसका logic समझा कहाँ से 8,000 आ रहा है? Every month 666 of interest we are paying and total on yearly basis we are paying 8,000 of interest expense which is called as COCD. Understood?
सो जैन महीने में अगर आप देखो तो 30 दिन के लिए इंटरेस्ट मैं चुका रहा हूं, बट सेम स्टोरी विल रिपीट फॉर अदर 11 months एज वेल, राइट? सो आई हैव टू पे 667 इंटू 12, एंटायर ईयर का इंटरेस्ट ऑफ 8,000. क्लियर? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, द लॉजिक इज दिस. ए बट हम सोल्यूशन में इतना बड़ा लॉजिक नहीं दे सकते. We cannot draw this timeline and give some very complex calculation. Examiner इसमें confuse हो जाएगा. So we have to cut this logic into short way. ठीक है? Short form में लाना है, short methodology में लाना है. So that short methodology simply follow that two step to calculate COCD. First, the amount of, that is nothing but amount blocked in debtors, ठीक है, by taking cost of sales. Understood? Step 2, directly apply COCD interest per annum on the debtors that you have calculated. ठीक है, तो डायरेक्ट पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा. नो नीड टू प्रिपेयर अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन. हाँ, लॉजिक इज दिस. एवरीवन अंडरस्टूड? सो विद इन 5 seconds you can quickly take the screenshot. So जिसको भी ये डाउट था कि सर हमने तो 30 डेज के लिए अमाउंट लिया है बोरोइंग, यस यू आर करेक्ट, 30 डेज फॉर 1 month सेल्स, बट ऐसे 11 महीने में भी स्टोरी रिपीट होगी ना. सो ईयरली इंटरेस्ट वुड बी 8,000. ठीक है, सो क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 2 steps टू कैलकुलेट सीओसीडी. So this is step 1. First, भाई पहले जानो तो सही how much is the amount blocked in debtors, because that amount you need to raise either through outside borrowing or either through own funds. ठीक है, so step 1, calculate amount of debtors and value debtors not on credit sales but on cost of sales. Cost of sales को समझने के लिए it is nothing but variable cost plus fixed cost का total. ठीक है, it is nothing but variable cost plus fixed cost, इंक्लूडिंग ऑल सेलिंग एक्सपेंस वगैरह सब आ गया. हाँ, बट एक्सेप्ट फॉर दैट एबीसीडी, एडमिन, बैड डेट्स, कलेक्शन एंड डिस्काउंटिंग इसमें नहीं लेना है. ठीक है, ओनली द ऑपरेटिंग कॉस्ट्स. क्लियर? एंड नाउ क्विकली टेक स्टेप 2 का स्क्रीनशॉट. So I hope all the students have understood the concept of cost of carrying debtors, or in other words opportunity cost of investment in debtors. अगर यही पैसा आप खुद के डाल रहे हो तो 10% you will call it as opportunity cost instead of interest cost. ठीक है? Okay. So now with this background of net benefit का format and of explanation about COCD, let's try and solve some practical problem from the module. Acha, this is the logic of how 8,000 per annum yearly interest figure was derived. So if someone wants to take screenshot, you can take. If you want to ignore, this is just explanation. From examination perspective, you simply follow 2 steps. Okay? However, if someone is interested in logic, they can take the screenshot of this screen as well. Okay, so now let's try and solve practical problem from module. Okay, so all the students please open module 2 and उसमें I guess unit number 4 है, management of receivables, unit number 4. You know na, under management of working capital there are 6 units. So from that unit number we are focusing on unit 4. Can you see the format of calculating net benefits? I told you my format might differ. Ultimately the final answer would be same and the ultimate decision would be same. ठीक है, मान लो ये 4 पॉलिसी में से they have asked to select the best one. So if institute solution as per module solution, if policy 1 comes,
then even as per my solution, policy 1 only will come, but in some different way. Okay? Ultimately, we will reach to Delhi. Clear? But by taking different routes. Now, okay, let's come to illustration number 12 on page number 9.75 of unit 4 of your module. Okay? The trader whose current sales are in the region of rupees 6 lakh per annum and an average collection period of 30 days wants to pursue more liberal policy to improve sales. Okay? So can I say the company's current policy is 30 days का credit दो, and अगर 30 days का credit देते हैं तो पूरे साल में they are generating 6 lakhs of sales. बट नाउ दे आर इवेल्युएटिंग कि नहीं यार 30 डेज से थोड़ा लिबरल कर देते हैं, 40 डेज 45 डेज 60 डेज कर देते हैं, सो दैट आर सेल्स इंक्रीजेस. क्लियर? द स्टडी मेड बाय द मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सो स्टडी से क्या पता चला? देयर आर 4 अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. यू इंक्रीज योर कलेक्शन पीरियड बाय 10 days. ये तो कहना है योर पॉलिसी नंबर 1 वुड बी एग्जिस्टिंग 30 days प्लस इंक्रीज बाय 10 days, मतलब पॉलिसी 1 40 days. Likewise, policy B credit period would be 60 days. Policy C credit period 70 days, and policy D credit period policy 2 it would be 30 plus 20 means 50 days. Policy C 30 plus 30 60 days. Policy D 30 plus 45 75 days. So I told you अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ता है अल्टीमेट फायदा क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स. ठीक है, तो सेल्स भी बढ़ रहा है. बट कैन आई से इफ क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीजेस सेल्स it comes with own cost, it comes with its own risk. If you see default यानी कि bad debts percent भी बढ़ रहा है. Clear? So it comes with own risks and cost. The selling price per unit is rupees 3. ठीक है? Average cost per unit is 2.25. So can I say my selling price is 3, my cost is 2.25, then profit would be 0.75. So in other words, can I say this average cost is nothing but cost of sales, 2.25 per unit. Variable cost is rupees 2. Oh, okay. Total cost is 2.25. It means, can I say, इसमें से 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है. करेक्ट? बैड डेट्स लॉस, द करंट बैड डेट्स लॉस इज 1%. So this bad debts loss is about our existing policy of 30 days. मतलब हमारी फिलहाल जो कंपनी में क्रेडिट पीरियड चल रहा है 30 डेज का, उसमें बैड डेट्स लॉस 1% होता है. नाउ इफ यू आर चेंजिंग योर क्रेडिट पीरियड टू एनी ऑफ दिस पॉलिसी, तो बैड डेट्स परसेंटेज विल ऑल्सो vary. Clear? Assume 360 days in a year. Analyze which of the following would you recommend. So can I say they are asking us to evaluate your present policy, compare it with new options A, B, C, D, select the best one. Clear? And I already explained you the best policy, the best credit policy would be that policy, would be that credit period which generates maximum net benefit. Maximum net benefit means maximum the company. Here, so here, can I say I have to prepare format of net benefit? Okay, and the format with which I am comfortable, I will prepare that. The format with which you are comfortable, you can prepare that. Ultimately, last का decision making should be same. ठीक है, उसमें differ नहीं होना चाहिए. So here I will write present policy, and then साथ में there are 4 options: policy A, B, C and D. ठीक है? Okay. So present policy में my average collection period is 30 days. In policy A, this collection period will increase by 10 days.
So can I say ACP would be 40 days? Likewise, in policy B, it will increase by 20 days. So ये 50 हो गया. पॉलिसी सी में 60 डेज हो जाएगा एंड पॉलिसी डी में 75 डेज. ठीक है. सो दिस इज माय एसीपी फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर ऑप्शंस. Okay, so I know my format starts with sales. So my present sales on giving 30 days का credit, sales is 6 lakh. ठीक है. So I will write 6 lakh under present policy. अच्छा, अगर हम क्रेडिट पीरियड 10 दिन से बढ़ा देते हैं तो सेल्स 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा. तो कैन आई से द सेल्स अंडर क्रेडिट पॉलिसी ए वुड बी 6,30,000. Clear? Likewise, for policy B, it would be 6 lakh plus 48,000. 648. C, it would be 6 lakh 75. And for policy D, it would be 6 lakh 90. 6 lakh 75. 6 lakh 90. ठीक है. फिर हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे. I will get contribution. इसमें से if I subtract fixed cost, I will get operating profit. ये सुनो, ये फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है. एंड देन आई विल सबट्रैक्ट ABCD COCD. ठीक है. बट सारे कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है. इन एग्जामिनेशन यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई कि ABCD में से कौन सा कॉस्ट है क्वेश्चन में. Okay, let's again read the question. I can nowhere see admin cost. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो नो नीड टू राइट दैट. सेव द टाइम. हाँ, डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट इन पेमेंट मीन्स बैड डेट्स है. सो आई विल राइट बैड डेट्स बी लिखूंगा. ठीक है. अच्छा, देयर इज नो कलेक्शन कॉस्ट, देयर इज नो डिस्काउंटिंग कॉस्ट एज वेल. इफ यू रीड, टेक half a minute and see is anywhere collection cost or information on discounting given. I can see nowhere. ठीक है. So just ABCD में से B है bad debts. That only I will write. Yes, amount blocked in debtors तो रहेगा ही रहेगा. ये because हम credit दे रहे हैं तो पैसा ब्लॉक तो होने ही वाला है. पैसा ब्लॉक होगा तो we have to raise these funds, the amount that is blocked. तो COCD तो आएगा ही आएगा. ठीक है. So I will subtract COCD and I will calculate COCD using working note number 1. ठीक है. I will calculate COCD using working note number 1. The resultant figure, can I say it will be termed as net benefit before tax. ठीक है. अगर कुछ टैक्स है तो you can subtract tax as well and the resultant figure will be called as net benefit आफ्टर टैक्स. अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, यू कैन इग्नोर लास्ट टू स्टेप. नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स विल ओनली बी योर नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स अगर टैक्स इज नॉट देयर. बट हियर आई एम मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फॉर्मेट, सो आई एम राइटिंग इट डाउन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ इवेल्युएशन इज रेडी. ढांचा हमने तैयार कर दिया है. फॉर्मेट इज रेडी. Now we have to simply calculate and substitute the values in this format. ठीक है. Okay. Now first let's calculate variable cost. Sir, variable cost per unit is given 2 per unit. तो can I say listen very carefully. Per unit variable cost is 2. Per unit selling price is 3. So can I say my variable cost to sales ratio is 2/3. Yes or no? 66.67%. My PV ratio would be 33.33%, 1/3. Are you following everyone? So from working note number, अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 हमने COCD के लिए रखा. ठीक है. So in this question, let's calculate COCD using working note 2 and let's calculate variable cost and fixed cost using working note number 1. ठीक है. Always give reference of working note in your solution. It creates good image.
So working note number one, calculation of variable cost and fixed cost. ठीक है? Selling price per unit. SPPU means selling price per unit. Get familiar with short terminology. Is rupees 3. Can I say my VCPU? What is this VCPU? Sir, FM में गाली नहीं बोलने की. This is not गाली. It is variable cost per unit. Rupees 2. ठीक है? So can I say my therefore variable cost to sales ratio will be 2/3. Yes or no? जितना सेल्स है उसका 2/3 will be my variable cost. Correct? So can you calculate and tell me how much would be variable cost in present policy? It would be 6 lakh into 2/3. 6 lakh into 2/3. 4 lakh. Yes or no? Everyone followed ये कैसे आया? तो it is nothing but 6 lakh का 2/3. Likewise, कैन आई से अगर सेल्स बढ़ता है तो प्रपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो फॉर ईयर सॉरी ईयर नहीं पॉलिसी ए इट वुड बी 630 का 2/3 4,20,000. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विथ सेल. फॉर क्रेडिट पॉलिसी बी इट वुड बी 648 का 2/3 4,32,000. And for credit policy C, it would be 675 का 2/3 4,50,000. 690 का 2/3 4,60,000. Clear? So my contribution comes to 2 lakh 2,10,000 216 2,25,000 and this is 460. Huh? $2,30,000. ठीक है. So contribution is done. Now let's calculate fixed cost. Can I say in year one, my total cost per unit was 2.25. Yes or no? See, average cost per unit is 2.25. Correct? So in other words, ये 2.25 is my total cost. ये 2.25 में वेरिएबल भी आ गया, फिक्स्ड भी आ गया. ठीक है. So from this total cost, they have given कि rupees 2 is variable cost per unit. Yes or no? तो can I say balance बचा हुआ 0.25 would be my fixed cost per unit. Yes or no? Are you following? So if I calculate fixed cost to sales ratio, it would be 0.25 divided by 3. See, fixed cost does not vary with sales. Huh? Just I'm calculating the fixed cost ratio. Okay? So this is nothing but fixed cost to sales ratio. 0.25 divided by 3. 0.0833%. 0.0833. Correct. So fixed cost under my current policy would be 6 lakh into 0.25 divided by 3. If 50,000 आ रहा है सबका, 50,000 is my fixed cost. Yes, 50,000. Correct. Now very important. See, ये fixed cost ratio
डज नॉट वेरी विथ सेल ना, तो ईयर 1 में माई सेल्स इज 6,30,000, तो 6,30,000 इंटू 0.0833% नहीं करना है. क्लियर. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, बी वॉट एवर बी योर क्रेडिट पॉलिसी. अंडरस्टूड. सो अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को सेल्स के साथ वेरी कर रहे हो तो कहना है इसे वो वेरिएबल कॉस्ट बन गया. हाउ कैन यू कॉल इट एज फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ, जस्ट टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट अंडर करंट पॉलिसी वी हैव फाउंड द फिक्स्ड कॉस्ट रेशियोज टू सेल. ठीक है, बट वो सेल्स के साथ फिर एवरी पॉलिसी में बढ़ाना नहीं है. So if you keep on increasing the fixed cost in proportion to sales, then that will not be called as fixed cost. उसको variable cost बोलना पड़ेगा. Clear? Fixed cost is that cost which varies which does not vary with sale. Clear? वो fixed रहता है. तो अगर ऐसे just to calculate fixed cost for year 1, we found the fixed cost to sales ratio. ठीक है? So अगर ऐसे 50,000 आया था, ये सर नो 50,000 कैसे आया? तो 6 लाख इंटू 0.25 डिवाइड बाई 3. क्लियर. बट अब नेक्स्ट ईयर में 630 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 3 नहीं करना है. इट मीन्स यू इफ यू हैव इंक्रीज द सेल्स यू आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट. तो द पर्पस, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वुड गेट डिफीटेड ओवर हियर. आर यू फॉलोइंग? सो हियर ideally students do mistake. Area of error where most of the students do mistake. They take this ratio and increase with the increasing sales. Are you following? जैसे जैसे sales बढ़ रहा है, they keep the ratio same, but they increase the amount of fixed cost. ठीक है, तो वो नहीं करना है. ठीक है. So fixed cost will remain same, be it policy A, be it policy B, be it policy C, be it policy D. Clear everyone? So operating profit in first case comes to 1,50,000, 1,60,000 for policy A, 216, 1,66,000 for policy B, फिर 225 minus 50, 175 for policy C, and 180 for policy D. Again, I am repeating, fixed cost means the cost that remains fixed irrespective of whatever policy you take. ठीक है. हाँ, just to calculate fixed cost amount, the style of presenting, the style of giving data in the question was based on sales ratio. ठीक है, बट वो जस्ट करंट फिक्स्ड कॉस्ट को ढूंढने के लिए था. ठीक है, यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस सेम रेशियो विथ डिफरेंट पॉलिसी का सेम. क्लियर. ओके, नाउ बैड डेट्स. Bad debts under current policy is 1%, and you know bad debts is always on sales. ठीक है. So bad debts for present policy it is 6 lakh. उसका 1% is my bad debts cost. So 6 lakh into 1% means 6,000. Bad debts for present policy 6 lakh का 1%. For policy A, 6.3 lakh is the sales and my bad debts percent is 1.5%. Bad debts is always on sales. So 9,450 for credit policy A. Likewise 648. Bad debts percent for policy B is 2%. So it comes to 12,960. Policy C 6,75,000 into 3%, 20,250. Policy D 6,90,000 into 4%, 27,600. So these are my bad debts. ठीक है. So now the only variable, the only term that we need to find is COCD now. ठीक है.
बाकी सारे कॉस्ट, सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ढूंढ लिए. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज सीओसीडी. सो टू कैलकुलेट सीओसीडी, आई टोल्ड यू फॉलो टू स्टेप प्रोसेस. क्लियर एवरीवन? तो वही स्टेप, वही सेम टू स्टेप वी विल फॉलो. स्टिक टू द फॉर्मेट, स्टिक टू द प्रोसेस. योर सॉल्यूशन, you will feel that it gets simplified. ठीक है? Calculation of COCD amount. Step वन. स्टेप वन, पहले भाई डेटर्स में अमाउंट कितना ब्लॉक्ड है वो तो ढूंढो. सो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेटर्स. बट कैन आई से डेटर्स? वी विल नॉट वैल्यू ऑन सेल्स, वी विल वैल्यू ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है? ओके. सो दिस इज प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, पॉलिसी डी. How much is my cost of sales in present policy? Can I say cost of sales is nothing but variable cost of 4 lakh plus fixed cost of 50,000. So under present policy, my cost of sale is 4 lakh 50,000. ठीक है? Average collection period is 30 days and we have to assume 360 days in a year. So my amount of debtors under present policy, not the amount of debtors, but I will term it as amount blocked in debtors, would be 4,50,000. ACP is 30 days divided by 360. Clear everyone? So 450 into 30 divided by 360. 37,500 is the amount blocked in debtors. This is not your COCD amount. This is amount blocked in debtors. मतलब this is the amount that we will arrange either through borrowings or either through own funds. ठीक है? Likewise, policy A में how much is the amount blocked? 4,20,000 in variable and 50,000 in fixed. ठीक है? So 4,70,000 is the cost of sales that is blocked for 40 days. So 4,70,000 into 40 divided by 360. Clear everyone? 360 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में they have specifically said assume 360 days in a year. 52,222.22 rupees. ठीक है? Likewise, let's calculate debtors for policy B, C, D. Students, you also simultaneously solve it on Calci. Huh? I explained you. ये क्या हो गया? I explained you the way. You just calculate on your Calci. Total cost of sales 432 plus 50. It is blocked for 50 days. So 482 into 50 divided by 360. 66,944. 482 into, सॉरी 50 नहीं 60 डेज है. 60 डे 50 डेज था कि 60 डेज था? 50 था सर. पॉलिसी बी, ए आई डिड सम मिस्टेक. क्या पॉलिसी, ओ पॉलिसी बी सी में लिख रहा हूं मैं. बी सी डी गैप नहीं था ना तो दिखा नहीं मुझे. 482 into 50 divided by 360. 66,944.44. ठीक है? For policy C, amount blocked in debtors is 4,50,000 plus 50. 5 lakh and it is getting blocked for 60 days. So 5 lakh into 60 divided by 360. So 5 lakh into 60 divided by 360. Into 60 divided by 360. 83,333.3.
So higher the amount of debtors, more would be the amount block. Likewise, last policy ka we will calculate the debtors amount. Not debtors, but actually the amount blocked in debtors. 460 plus 50, 5 lakh 10. And this is getting blocked for how many days? 75 days. So 5 lakh 10. 5 lakh 10 into 75 divided by 360. 106,250. So we have found the amount blocked in debtors for all the policies, including the current policy. But again, another area of error. Step 1 हो गया. Students substitute this value in COCD. This is not COCD. This is amount blocked in debtors. This is the funds that we need to arrange either through borrowing or through own funds. ठीक है? So इस पे इंटरेस्ट, इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज योर सीओसीडी अमाउंट. क्लियर? स्टेप 2, अप्लाई सीओसीडी परसेंटेज पर एनम. ठीक है? सो अगेन प्रेजेंट ए बी सी डी. My present amount of debtors was how much? 37,500. पॉलिसी ए में था 52,222.22. बी में 66,944.44. 66 था कि 69 था? 66. 944.44. सी में था 83,333.33. एंड डी में है 106,250. ठीक है? इस पे वी विल अप्लाई आर सीओसीडी परसेंट पर एनम. How much is the rate of interest given in the question? Assume required return on additional investment is 20%. So can I say my ROI is 20%? So I will multiply this by 20%. 20. ठीक है? सर स्टेप 2 वी कैन कंबाइन विथ स्टेप 1 ओनली. यहाँ हमने डेटर्स स्टेप 1 में ढूंढना है. यहाँ पे भी आप सीधा 20% कर सकते हो. यस, यू कैन डू इट. इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन डू इट. यू कैन कंप्लीट सीओसीडी इन वन स्टेप इटसेल्फ. उल्टा मैं तो ऐसे भी बोलूं, इफ यू डोंट नीड वर्किंग नोट यू कैन डायरेक्टली शो द कैलकुलेशन इन योर ओरिजिनल फॉर्मेट. ठीक है? इफ यू आर वेरी स्मार्ट इनफ, नो नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट. डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्मेट में आप कैलकुलेशन दिखा दो, डायरेक्टली सॉल्व कर दो. बट दिस इज जस्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी बिकॉज not all the students are smart, right? I have to explain it in a very simple language. इसलिए I explain it, I take 2 steps so that समझ आए. So this comes to 37,500 into 0.2. 7,500 is my COCD for present policy. 52,222.22 into 0.2. 10,444.44. 66,944.44 into 0.2. 13,388.88. You can also round it off to nearest rupees. No worries in that. 83,333.33 into 0.2. 16,666.66. And last but not the least, 106,250 into 0.2. 21,250. So these are my COCD amount for respective credit policy ABCD, including current policy. Okay? So I will just substitute this value in my original format. 7,500 अरे यार, I forgot the amounts. I need to go down again. 10,444.44
13,388.88. 10,444.44. 13,388.88. Last year का I know it is 21,250. Last year नहीं, sorry, policy D का it is 21,250 and for policy C 16,666.66. 16,666.66. Clear everyone? So my net benefit before tax comes to how much rupees? 150 minus 6,000 minus 7,500. 136,500. Tax is nil. Net benefit after tax 136,500. No tax rate is given in the question. Huh? So you cannot assume your own tax rate, just ignore it. For policy A, 160 minus 9450 minus 10,444.44. 140 105.56. 140 106. ठीक है, I am rounding off to nearest rupees. 1,66,000 minus 12,960 minus 13,388.88. 139,651. For policy C, 175 minus 2250 minus 16,666.66. 138,083. $180 minus 27,600 minus 21,250. 131,150. ठीक है, टैक्स नील 131,150. सो यू हैव टू चेक मैक्सिमम नेट बेनिफिट कहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है. कैन आई से इट इज कमिंग हाईएस्ट इन पॉलिसी ए. सो कंपनी शुड अडॉप्ट credit policy A, that is giving credit of 40 days to its customers. Are you following? बाकी सब में इससे कम आ रहा है. Understood everyone how to solve it? Can you see final answer is same? ठीक है. The way of presenting might be different. Clear everyone? But final answer and final decision making same आएगा. Understood? Okay, so here I will just write comment. Company should adopt credit policy A, that is ACP of 40 days, as it generates maximum net benefit. Clear everyone? So you should write the comment as well. If question is specifically asking कौन से policy में जाना चाहिए, you should write the comment as well. ठीक है. Last, a very very important note. I advise this note to all my students. Note, debtors are valued at cost of sales or total cost. ठीक है. Debtors are valued at cost. ठीक है. But let's say in few questions you will not have any information on cost. यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा. Are you following? So in that case, can I say my sales will only be my operating profit? Clear? And in that case, can I say I have to value debtors on sales itself because I don't have any other option. I don't know the cost of sales.
आर यू फॉलोइंग? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आपको कॉस्ट की डिटेल्स, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, तो इन दैट केस योर सेल्स विल ओनली बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड इन दैट केस वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट कैन आई से वी हैव टू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स इटसेल्फ, बिकॉज हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो टेक द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। क्लियर एवरीवन? ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी बट फिक्स्ड कॉस्ट की कोई डिटेल्स नहीं होगी। आर यू फॉलोइंग? सो इन दैट केस कैन आई से अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूशन, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर अस बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन गिवन, so we cannot assume हमारे मन का फिगर। Clear? So in that case, contribution will be operating profit. So can I say if I want to value the debtors in this scenario where fixed cost is not given, I will value on variable cost. Are you following? जो information है, use the best of it. Clear everyone? So first, always my first advice, preference one, value debtors on total cost, that is variable plus fixed. ऑप्शन टू, फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल्स नहीं दी गई है, देन वैल्यू डेटर्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। प्रेफरेंस थ्री, वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल्स भी नहीं दी गई है, वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स। क्लियर है? बट राइट अ नोट अबाउट इट एट द एंड। ये क्लैरिफिकेशन आप दे दो एग्जामिनर को। क्लियर एवरीवन? सो दिस नोट that I have mentioned at the end, I always advise to all my students that this should form part of your answer. ये नोट लिखना जरूर, ठीक है? डेटर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। ऑल्टरनेटिवली कैन आई से और दो प्रेफरेंस आ सकते हैं। प्रेफरेंस टू, इट कैन बी वैल्यूड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? ऑल्टरनेटिवली it can also be valued on sales. But I always advise give select preference wise. Preference wise means variable fixed. दोनों information is available like the current illustration. Value on total cost. ठीक है? C next, preference to fixed cost नहीं दिया है, value on variable cost. प्रेफरेंस थ्री, अच्छा सर कोई भी इन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वैल्यू ऑन सेल्स, वी हैव नो ऑप्शन नाउ। आर यू फॉलोइंग? बट आइडियली इट शुड बी ऑन अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर्स, एंड द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स इज योर कॉस्ट। क्लियर एवरीवन? दिस इज द सिंपल लॉजिक। Understood? So how? So learning objective one we complete over here. Evaluation of different of various multiple policies, multiple credit period, and selecting the best one of it. Understood? Best one would be that policy which maximizes the net benefit. Okay? And how to calculate net benefit? We have understood the detailed format of it. Clear? So if you want to take screenshot of this solution, you can quickly take it in 5, 4, 3, 2, 1. Next screen. Take the screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Scrolling down. Working note 1. Calculation of variable and fixed cost. So this means 2/3 of sales is variable cost. Clear? 833%,
for current policy. This above, no, this is just for current policy. ठीक है? एक बार आपने करंट पॉलिसी का फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढ लिया, दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉलिसी. ठीक है? डोंट वेरी इट विथ सेल. सेल्स के प्रपोर्शन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट मत बढ़ाना. वर्किंग नोट नंबर 2. टेक स्क्रीनशॉट इन 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3. This is 7,500. 5, 4, 3, 2, go. 5, 4, 3, 2, 1. So with this, we complete learning objective number 1, that was on evaluation of different credit policy, selecting the best one out of it. Clear? Now, see, in this present question, एसीपी आपको कितनी सिंपल भाषा में दे दिया है कि पॉलिसी ए के लिए इट इज 40 डेज, पॉलिसी बी के लिए 30 डेज, पॉलिसी बी के लिए 50 डेज, पॉलिसी सी के लिए 60 डेज, प्रेजेंट के लिए 30 डेज. हाउ सिंपल लैंग्वेज दे हैव यूज्ड फॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड. ठीक है? समटाइम्स दे विल यूज सम टेक्निकल लैंग्वेज फॉर क्रेडिट पीरियड. ठीक है? Let's understand that what that technical language means. Sometimes आपको credit period कैसे देंगे पता है? So let's say this is current credit period. 2/10 net 30. ये ऐसा बोलेंगे 2/10 net 30. So again देखने में it sounds so weird. ठीक है? But this is nothing but credit period only. What does this 2/10 net 30 mean? I don't know if you have faced this terminology or if you have come across this terminology or not, but I will explain to all the students. अगर आप जानते हो good, नहीं जानते हो then also good. I will teach you now. So this is about ACP. The ways how ACP can be given. Number 1, simply they will directly give it in days, months, weeks, etc. ठीक है? But sometimes they will use such terminologies. 2/10 net 30, 3/15 net 45. तो इसका मतलब क्या? So this means ideally the normal credit period is of 30 days. मतलब my general credit period to all the customers is 30 days. But if the customer makes the payment before or on 10th day, 10 या 10 दिन के पहले पेमेंट कर दो, तो I will give you 2% discount. This is what it means. Are you following? So net 30. 30 means this is general credit period. Credit period in normal terms. ठीक है? 30 days. But if you make the payment on or before 10th day, payment made on or before 10th day, then you will receive a discount of 2%. Are you following? This is discount ka rate. Clear? This is how you should interpret if the question uses such language to denote credit period. ठीक है? Understood how to interpret this, how to read this? 2/10 net 30 means normal. Ideally, the credit period to all the customers is 30 days. बट अगर आप 10वें दिन पे या उसके पहले आके पेमेंट कर देते हो, I will give you 2% credit. So with same understanding, with same analogy, students, can you tell me what would this mean? 3/10 net 45. इसका मतलब क्या होगा? General credit allowed is 45 days. So company ka normal norms of credit period is 45 days. But if you make the payment on 15th day or before that, company will give you 3% discount. ठीक है? General
credit norms, 45 days. But if customer makes payment on or before 15th day, then company will grant discount of 3% to that customer. ठीक है, टू दैट कस्टमर. ये अब मान लो 50% लोग, 50% ऑफ आर कस्टमर्स आर पेइंग विद इन 15 days. तो कैन आई से 50% कस्टमर्स आर एलिजिबल टू रिसीव कैश डिस्काउंट. तो कैन आई से इन दिस केस देयर वुड बी सम डिस्काउंटिंग एक्सपेंस एज वेल. एबीसीडी में डी वाला पार्ट आएगा. Are you following, students? So I'm just explaining the different terminologies that might be used in different questions for credit period. ठीक है? Clear till here? So with this, we complete learning objective number 1, evaluation of different credit policy and choosing the best one, the best fit for the company. Clear? Now let's move to topic number 2, that is factoring. Factoring. Okay. Have you heard of this term factoring before in financial management or from financial perspective? See, this is not your mathematics का वो least common LCM HCF वाला, ये वो factor नहीं है. हाँ, this is something different than that mathematics concept. ठीक है? So factoring is nothing but it is a outsourcing service. इसको मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं ना, तो इट इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस. मतलब बिजनेस में एक प्रोसेस है, जो काम हम नहीं करेंगे उसको आउटसोर्स करेंगे, किसी और से करवाएंगे. हाँ, वॉट एवर दे चार्ज द फीस वी विल पे दैट, बट वो काम हम नहीं करेंगे. वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम टू follow that process or to run that process. We will outsource it to third party. He will charge the fees, commission. Fees बोलो, commission बोलो, charges बोलो, we will pay that. ठीक है? So यहाँ पे first of all बिजनेस में तो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस. सेल्स होता है, सेल्स इज अ प्रोसेस. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस. ठीक है? कलेक्शन इज अ प्रोसेस. आर यू फॉलोइंग? सो इन दिस चैप्टर we are talking about collection process का outsourcing. You did sales to the customers. See, doing sales is one job. वो sales और marketing team का job is done. But timely recovery of money from that sales is equally important. मान लो आप बिजनेस में सेल्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, टर्नओवर 20 करोड़ का हो, बट पैसा, उस सेल से पैसा सिर्फ 50 लाख आया है. So can I say you are not focusing on your collection process, or your collection team is not good? You are just focusing on growing your business in the form of turnover. But collection of money is equally important. उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है. Understanding? So that collection process is outsourced to third party called factor. Are you following everyone? Factor का काम क्या होगा? He will call your customers. He will recover the amount on your behalf. Are you following? But can I say factoring is not existing to do some charity work, to do some donation work. वो भी अपना business लेके बैठे हैं. So in providing this service, can I say they will charge some commission or fees called as factoring fees or factoring commission. Understanding? So they charge some percentage on the amount that they collect. Are you following? Sales का कुछ percent they charge. Either you call it as commission or fees. That is one and the same. Clear? So factoring means, in simple terms, it is nothing but outsourcing of your business process. यहाँ हम कौन से business process की बात कर रहे हैं? यहाँ हम collection process की बात कर रहे हैं.
It means I am not, my in-house team currently is not good in collection. उनको धंधा कैसे बढ़ाना है वही आता है, बट धंधा जो सेल्स हो रहा है उसका कलेक्शन कैसे करना है, दे आर नॉट एफिशिएंट इन दैट. सो व्हाट आई डू, लेट मी फोकस ऑन जस्ट इंक्रीजिंग द सेल्स. ठीक है, मेरा जो फोर्टे है, द एरिया वेर आई एम गुड विथ, लेट मी फोकस ऑन दैट. मुझे धंधा बढ़ाने दो. Collection process is not my forte, is not my area. Let me outsource it to the one who is having experience. Are you following? And that organization is called as factor. Understood? So factoring is a process of outsourcing your collection process. ठीक है? Factor, ये सर्विस कौन देते हैं? This service or collection service is given by organization called as factors. And factors कौन होते हैं? तो factors are generally banks or financial institutions. बैंक्स वगैरह, एनबीएफसी वगैरह हो गए, दे गिव यू दिस सर्विस. ठीक है, दे डू द कलेक्शन ऑन योर बिहाफ. क्लियर एवरीवन? सो फैक्टरिंग in a very layman terms, in a very rational terms, is nothing but outsourcing of your collection process. To whom we will outsource our collection process? We will outsource to banks or financial institution called factors. ठीक है, factor in providing the collection service will charge factoring commission, or you can also term it as factoring fees. ठीक है, and this fees is always as a percentage of sales. जितना सेल्स का कलेक्शन करके दिया उतना परसेंटेज दे जनरली चार्ज. ठीक है, will charge factoring commission, factoring fees as a percentage of sales. Clear everyone? So factoring क्या होता है समझा? Factoring is nothing but simply a outsourcing of your business process. Outsourcing of which business process? Collection process. To whom we will outsource this? We will outsource this to the professional called factors. Who are the factors? Who are the institutions service in India? They are banks or NBFCs or financial institutions. What do they charge in return? They charge factoring commission or factoring fees, and which is always calculated as a percentage of sales. Understood? Everyone, any doubts, any queries still here? If you have any queries, you can just send it. You can keep it with yourself, or you can send it in the Telegram link, or you can send it over an email at Board of Studies wala email pe. Clear everyone? So this is factor. Okay. So can I say in other words, simple meaning of factor is कि हम हमारा business का collection process outsource कर रहे हैं. But can I say still the amount that is blocked in the data, still I need to raise that finance, वो तो बाकी रह गया. Are you following? हमने क्या आउटसोर्स किया? हमने जस्ट आउटसोर्स किया कलेक्शन करके दो हमारे बिहाफ पे. बट ये कलेक्शन, कैन आई से इफ आई गिव क्रेडिट ऑफ 30 days टू माय कस्टमर्स, तो कैन आई से ये कलेक्शन भी 30 दिन या थोड़े कम दिन में करके देंगे. बट टिल दैट पीरियड amount is blocked in the debtors, and for smooth running of my business operations, I cannot afford that this amount get blocked for even one day. ठीक है, एक दिन के लिए भी पैसा ब्लॉक रहे बिजनेस में, मेरा स्मूथ फंक्शनिंग को हैम्पर करेगा. इट विल इफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग. सो अगेन दैट पार्ट इज लेफ्ट. COCD वाला पार्ट याद करो. द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स दैट आइदर वी रेज थ्रू बोरोइंग्स और आइदर वी इन्वेस्ट आवर ओन फंड्स. सो यहाँ पे भी दे आर सिंपली योर कलेक्टर्स. दे सिंपली कलेक्ट ऑन योर बिहाफ. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फंडिंग. ठीक है, बट देयर आर सम फैक्टर्स जो कलेक्शन सर्विस तो देंगे ही देंगे, बट साथ में दे विल से हे sit, you want the funding for amount blocked in debtors. So we ourselves are a bank or financial institution.
हमसे ही ले लो, ये पैसा भी हमसे ले लो, द अमाउंट दैट इज ब्लॉक, जिसके लिए आप कोई और बैंक, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाने वाले हो, वहां क्यों जा रहे? हम हमारे अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला, वी प्रोवाइड दिस एडवांस एज वेल, आर यू फॉलोइंग, वी प्रोवाइड दिस लोन एज वेल, तो हमसे ही ले लो ना. टेक ऑल सर्विस अंडर वन रूफ. अंडरस्टूड एवरीवन? सो इन शॉर्ट, I wanted to explain that there are two types of factors. One is those who only provide collection service. One is those apart from collection service, they also grant you the advance for the amount blocked in debtors. Are you following? How? Obviously, even they will charge some interest in return. Huh? So for collection service, they will charge factoring commission, factoring fees. But for granting an advance, granting of loan, they will charge interest. Clear, everyone? So type of factoring service. फैक्टरिंग पे थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए हम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस. सम फैक्टर्स प्रोवाइड ओनली कलेक्शन सर्विस. सम फैक्टर्स प्रोवाइड ओनली कलेक्शन सर्विस. तो कहना है इसे, इस केस में वी विल पे ओनली द फैक्टरिंग फीस और फैक्टरिंग कमीशन. ठीक है. एंड इस केस में द अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड इन डेटर्स, either we will invest our own funds or either we will borrow it from somewhere else, not from the factor but from some other banks or some other financial institution. Clear? But there are some factors who are saying, अरे भाई हमारी दुकान में आए हो तो सारा गुड्स हमारे दुकान से ही खरीदो ना, अवेलेबल है सब चीज. ठीक है. सो देर आर सम फैक्टर्स हु प्रोवाइड कलेक्शन सर्विस plus they grant advance for the amount that is blocked in debtors. ठीक है. They grant advances as well. So for collection service, obviously they will charge some factoring fees or commission. But for granting of an advance, जो आपको उधार पे पैसा दिया है, कहने से they will charge interest in return. So this is called as interest on advance granted. Clear, everyone? So you have to read the question carefully and identify, are they providing just factoring collection service, then factoring fees, factoring commission, but क्या साथ में वो एडवांस भी दे रहे हैं आपको, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी साथ में आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स. ठीक है. फैक्टरिंग के अंडर क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो मैं समझा रहा हूं. ओके. नाउ लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टरिंग अग्रीमेंट. फैक्टरिंग अग्रीमेंट. ठीक है. फैक्टरिंग अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या लग रहा है? कहना इसे, अग्रीमेंट इज नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड बिटवीन टू पार्टीज. आई एम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सामने द काउंटर पार्टी इज बैंक. तो हमारे बीच, हम दोनों के बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री किए होंगे, दैट वुड बी एंटर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, रिटर्न इन दिस डॉक्यूमेंट. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज कल उठ के कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, दिस डॉक्यूमेंट विल बी अ बेस फॉर लीगल प्रोसेस. क्लियर? तो फैक्टरिंग अग्रीमेंट इज नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट. टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं पता है? कोवेनेंट बोलते हैं. कोवेनेंट, COVENANT, कोवेनेंट. अ वेरी लीगल टेक्निकल टर्म. लीगल डॉक्यूमेंट that contains about terms and conditions agreed by the company and factor. ठीक है. सो कहना इसे, इस अग्रीमेंट में फैक्टरिंग फीस
कितना बैंक फैक्टर विल चार्ज वो लिखा होगा. सो दिस अग्रीमेंट विल कंटेन क्लॉजेस अबाउट फैक्टरिंग फीस. ठीक है, हाउ मच फैक्टर विल चार्ज वो लिखा होगा. ओके, इफ द टाइप ऑफ सर्विस ये भी लिखा होगा. वेदर फैक्टर इज गिविंग जस्ट द कलेक्शन सर्विस, इट इज ग्रांटिंग एडवांस एज वेल. वो सारे क्लॉज इसमें लिखा होगा टाइप ऑफ सर्विस में. अच्छा, इफ इट इज ग्रांटिंग एडवांस, इफ इट इज ग्रांटिंग एडवांस तो हाउ मच वुड बी इंटरेस्ट परसेंटेज, ये भी अग्रीमेंट में लिखा होगा. ये आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये अग्रीमेंट में कंटेंट क्या होगा. आर यू फॉलोइंग. And very important, one more clause would be there. Type of service नहीं, type of factoring. Type of factoring. क्या it is a recourse factoring or non-recourse factoring? This also would be mentioned in the factoring agreement, which is nothing but the legal document. नाउ सर, ये सर आप नए नए टर्म्स बहुत लेके आ रहे हो. व्हाट डू यू मीन बाय सर रिकोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकोर्स. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर एनीवेयर इन योर लाइफ और नॉट, बट रिकोर्स फैक्टरिंग मीन्स अगर कलेक्शन में, सी कलेक्शन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय फैक्टर, सो विजुअलाइज फैक्टर कलेक्शन कर रहा है एंड उसमें कोई बैड डेट्स होता है. And if the type of factoring is recourse, bad debts loss, bad debts के वजह से जो भी लॉस हो रहा है, company will bear the loss. Are you following? Company will bear the bad debts loss. ठीक है. So that type of factoring is called as recourse factoring or recourse clause. Are you following? But if it is non-recourse factoring, it means कलेक्शन के दौरान जो भी बैड डेट्स होते हैं, कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं. कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बेयर दैट लॉस. कंपनी विल से, हे बैंक, इट इज योर जॉब टू कलेक्ट. इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग, देन यू आर नॉट एफिशिएंट. आई शुड नॉट बेयर दैट लॉस. Are you following? So bank will say, okay, if our type of agreement is non-recourse, I will bear the loss. But practically non-recourse factoring में बैंक चार्जेस हायर फैक्टरिंग फीस, हायर फैक्टरिंग कमीशन. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज रिस्क ज्यादा है ना, बिकॉज योर फैक्टर विल बेयर द लॉस. ठीक है, फैक्टर विल बेयर बैड डेट्स लॉस इफ इट इज नॉन रिकोर्स. सो इफ बैंक या फैक्टर का रिस्क ज्यादा, कैन आई से दे विल आस्क फॉर मोर रिटर्न. सो हियर in case of non-recourse factoring, generally the factoring fees, factoring commissions are high. Risk है तो इश्क है, पैसा है. Higher the risk, higher the return. Clear everyone? So ये सारे clause भी specifically लिखने होते हैं. कल उठ के if you avail factoring service, read all these clauses, whether it is clearly mentioned or not. Understanding? Be a smart finance guy. So again, just to summarize what factoring is all about. So first we understood, sir, it is nothing but an outsourcing of your business process. Here we will outsource the collection business process, not sales, marketing, accounts, finance. वो सब outsource नहीं करेंगे. We will outsource collection process. To whom we will outsource? Sir, जो भी ये काम करता हो, professionals. कौन काम करता है collection का? Factors. And who are the factors? Banks provide this service. NBFCs, other financial institutions provide this factoring service. ठीक है? Okay, sir, we understood this. But sir, what type of service they provide? So some factors provide only the collection service. They don't have that bandwidth to grant the advance. छोटे size वाले factors, they just provide collection service. बट कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कलेक्शन सर्विस, दे ऑल्सो टेल यू आपका जो अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स है ना, वो हमसे ही ले लो ना, बाहर क्यों जा रहे. ठीक है, ऑल अंडर वन रूफ. ठीक है, सो दे ग्रांट एडवांस एज वेल. इफ दे जस्ट प्रोवाइड कलेक्शन सर्विस, दे विल गेट फैक्टरिंग फीस, फैक्टरिंग कमीशन इन रिटर्न. इफ दे प्रोवाइड एडवांसेस एज वेल, दे विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट एडवांस. क्लियर? फिर हमने देखा सर फैक्टरिंग अग्रीमेंट, इट इज अ लीगल
covenant containing all the terms and conditions that is agreed, agreed between two parties. जो चीज अग्री नहीं होती वो एग्रीमेंट में नहीं आती, ठीक है? एग्रीमेंट में ही नाम वर्ड नाम है अग्री, ठीक है? क्लॉजेस दैट आर अग्रीड बाय टू पार्टीज. तो जनरली यू विल सी फैक्टरिंग फीस का क्लॉज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस का क्लॉज, कौन से टाइप ऑफ सर्विस विच सर्विसेज फैक्टर्स आर प्रोवाइडिंग वो लिखा होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टरिंग इज इट रिकोर्स और नॉन रिकोर्स. ये सारे क्लॉजेस अग्रीमेंट में लिखे होते हैं. रिकोर्स फैक्टरिंग माने जो भी बैड डेट्स लॉस होगा उसका जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? कंपनी विल ओनली बेयर. बट इफ इट इज नॉन रिकोर्स, बैड डेट्स का लॉस हमारा पार्ट नहीं है, फैक्टर का पार्ट है, ठीक है? ही हैज टू बेयर दैट लॉस, हमें तो पूरा अमाउंट ही मिलेगा. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ लेट्स टेक a problem on factoring, that is learning objective 2. And ध्यान से समझना because there are some areas specifically interest on advance. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, दे फाइंड इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सो ध्यान से व्हेन आई कम टू दिस पॉइंट, पे अटेंशन. कुछ भी क्वेरी हो यू कैन ईमेल, यू कैन शेयर ऑन द टेलीग्राम लिंक, ठीक है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टरिंग क्वेश्चन में हमें करना क्या है? सर फैक्टरिंग तो समझ गए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी जो आएगा वी विल टैकल इट, बट व्हाट टू इवैल्यूएट अंडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग, हाउ टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन? इवैल्यूएशन क्या करना है? सो हियर यू हैव टू इवैल्यूएट टू थिंग्स. क्या हमें इन हाउस कलेक्शन ही कंटिन्यू करना चाहिए? Shall the company continue with in-house collection or shall the company avail factoring service? किसमें बेनिफिट, किसमें फायदा ज्यादा है, दैट वी हैव टू इवैल्यूएट. याद करो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले दिन, पुराने जमाने के दिन, older days where we understood shall the company continue with old machine only or shall it replace with new machine. अंडरस्टूड? वैसा ही शाल द कंपनी कंटिन्यू इन हाउस कलेक्शन, तो नेट बेनिफिट कितना, व्हाट इज द फायदा? और इफ कंपनी आउटसोर्सेस द कलेक्शन सर्विस एंड इफ कंपनी अवेल्स द फैक्टरिंग सर्विस, व्हाट इज द फायदा? सो जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट, नेट बेनिफिट ज्यादा, कंपनी शुड गो फॉर दैट ऑप्शन. अंडरस्टूड? फैक्टरिंग क्वेश्चन में करना क्या है? अगेन इन मॉड्यूल I am again repeating, the way of solving would be different, ठीक है? But the ultimate decision making जो आएगा ना, मान लो हमारा आता है इन हाउस कलेक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, तो मॉड्यूल में भी यही आंसर होगा. The way of solving presentation amount might be different, clear? But ultimate conclusion will be same. Are you following everyone? अच्छा, मान लो मेरा आंसर आ रहा है अवेलिंग फैक्टरिंग सर्विस जनरेट्स मैक्सिमम बेनिफिट, तो मॉड्यूल में भी अल्टीमेट डिसीजन यही होगा. Clear? So just focus on the ultimate decision. Clear? Way of solving might be different. So I'm giving you disclaimer right itself. ठीक है? Okay. So again, the format would remain same. Sales less variable cost, contribution less fixed cost, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, लेस ABCD COCD and can I say if we avail factoring services तो हमें फैक्टरिंग फीस भी माइनस करना पड़ेगा. बट टेल मी, क्या वो इन हाउस कलेक्शन में आएगा क्या? Will factoring fees come under in-house collection? No, you will only see if it is if you avail factoring service. ठीक है? Okay. And interest on advances. Interest on advance granted by factor. बाय फैक्टर, ठीक है? तो अगेन ये इन हाउस में नहीं आएगा, ये बिकॉज इन हाउस के लिए हम फंडिंग किसके पास से ले रहे हैं? सम अदर बैंक. सो इन दैट केस यू विल फाइंड COCD. बट इफ यू आर
availing the amount blocked in debtors from factor itself. So can I say here COCD आएगा, but there would be some slight change. But interest on advance granted by factor तो जरूर आएगा. COCD आएगा, but only on some smaller amount. Now what would be that smaller amount? We will learn in a while. ठीक है? Complete COCD नहीं आएगा because most of the financing is done by factor. Clear everyone? Understood till here? अच्छा, ये bad debts in house collection करते तो bad debts loss company has to bear. But if we avail factoring service, can I say I don't have to bear bad debts loss because bad debts loss will be borne by factor if it is non-recourse factoring. Clear? And standard assumption. See, if question is silent na about type of factoring, recourse है नॉन रिकूर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दी है तो you have to assume it is non-recourse factoring. ठीक है? This is a standard assumption of practical world. Whenever factoring agreement done and if is done and if the agreement is silent, it is assumed to be non-recourse factoring. ठीक है? So if question is silent, assume it is as non-recourse. Means bad debts का loss कंपनी को bear नहीं करना है, वो हमारा देख, it is not our responsibility. कंपनी का लुकआउट है. ठीक है? Clear everyone? Okay. Now, if you have understood the format, this is nothing but again net benefit before tax. Net benefit before tax. We will subtract tax and we will get net benefit after tax. So जिसमें भी either in-house or availing factoring service जिसमें net benefit ज्यादा है, we will go for that. ठीक है? Clear? Now very important note that I am trying to give you is in factoring questions. Very, very, very important note. In factoring questions. ठीक है? You have to value the amount blocked in debtors always on sales. ठीक है? ये ध्यान में रखना because institute our ICAI has solved. See, हम सारे भी जितने भी past questions का analyze करें on factoring, तो debtors has always been calculated on sales. ठीक है? So important note, in factoring questions, value debtors on sales and not on cost. ठीक है? Value debtors on sales. Clear everyone? So here, see, ideally you have to take, ideally the logic is amount blocked in debtors होना चाहिए. But हम जब factoring के पास जाते हैं ना, factoring ये सब calculate, see, you know what is your cost of sales. Factoring वाले को ये सब पता नहीं है, उनको भाई हमारा उतने हमको sales collection करने दिया है. So for us, the debtors is sales only. ठीक है? So if there is a factoring kind of question, you value debtors on sale. हमारे लिए cost of sales कितना है वो सबसे मतलब हमें नहीं है. हमारे लिए आपका debtors means आपका sales. That is what we believe. ठीक है? That is what we will consider. So in factoring kind of questions, the amount that is blocked in have to be calculated on sales amount. Clear? But ideally, again, I am repeating, the actual cost, actual amount blocked is on cost. But for factoring questions, we will value on sales. Clear? So now let's see if there is any practical problem on factoring. Yes, illustration number 15. A factoring firm has a credit sales of 360 lakhs and its average collection period is 30 days. ठीक है? So credit sales is 360 lakh, collection period is 30 days. The financial controller estimates that bad debts losses are 2% of credit sales. So our current bad debts loss is 2% of sales.
The firm spends 1,40,000 on annual debtors administration. तो अगर हम इन हाउस कलेक्शन करते हैं तो वी हैव टू सेट अप एन एडमिन टीम. तो एडमिन टीम का खर्चा इज 140. बट अब सोचो, इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस, कैन आई से नाउ आई डोंट नीड दिस एडमिन टीम. This all will be administered by the factor himself. So that cost will not come under if I avail the factoring service. Clear? This cost comprises of telephonic and fax bills along with salary of staff members. These are avoidable cost. Avoidable means अगर आप factoring की service avail करते हो, you don't have to pay this. ये आपका cost बच जाएगा. Factoring firm has offered to buy the firm's receivable. ठीक है? The factor will charge 1% commission. It means on providing collection service, they are charging 1% commission, and they will also pay an advance against receivables on interest of 15%. So can I say this is type 2 service? They are providing collection service as well as they are granting advance to us at 15% interest. After withholding 10% reserve, analyze what firm should do. Analyze what firm should do means they are indirectly asking you whether company should continue with in-house collection or whether company should avail factor service. ये analyze करो. This is what they are ultimately asking. So can I say to analyze this two options, calculate the net benefit? Yes or no? And net benefit, to calculate net benefit, we will follow our format: sales less variable for cost, contribution less fixed cost. ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से हम एबीसीडी सीओसीडी माइनस करेंगे. एनी इंफॉर्मेशन ऑन सीओसीडी रेट स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन? सी इन हाउस कलेक्शन करेंगे तो हम फैक्टर से तो एडवांस नहीं लेंगे, हम कहीं बाहर से लेंगे, लोन या फंडिंग. सो उसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है. डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? सी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, बट वो किसका दिया? फैक्टर विल ग्रांट एन एडवांस. बट मान लो मैं फैक्टरिंग सर्विस ही नहीं लेता, सो आई विल डू इन हाउस कलेक्शन. इन हाउस कलेक्शन के लिए अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स के लिए आई हैव टू फंड, आई हैव टू बोरो और गिव माय ओन फंड्स. ठीक है? उसका तो कोई रेट नहीं दिया है. तो कैन आई से इन एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, हियर यू हैव टू ऑप्शंस. One, you completely ignore COCD because COCD rate specifically is not given. So you completely ignore that. Second, if you want to take COCD, you assume कि भाई factor is charging 15%, तो दूसरी बैंक भी 15% ही चार्ज कर रही होगी. दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन will charge 15% only. Are you following? So you are free to use any opinion, any view. Just write a note at the end. But for the sake of simplicity, we will, in this case, we will ignore COCD. Why? Because COCD का specific rate is not mentioned. Clear? ये जो rate mention किया, we will assume कि ये factor का rate है. Not from other banks, not from other financial institutions. Understood? So in absence of that, we will ignore COCD. Clear? Okay. So now let's admin cost था, so I will subtract admin cost. ये bad debts के बारे में there is, हाँ bad debts loss भी है, so I will subtract bad debts. COCD मैं यहाँ लिख रहा हूँ, there is no collection, there is no discounting. COCD यहाँ मैं लिख रहा हूँ, but cancel भी कर रहा हूँ because I am ignoring, because the rate is not given. Specific rate of COCD is not given. अच्छा, इसके अलावा टू मोर कॉस्ट: फैक्टरिंग कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांस. ठीक है? इंटरेस्ट ऑन एडवांस वी विल यूज वर्किंग नोट. वी विल कैलकुलेट, do all the calculations in working note and substitute the figure of interest on advance in our main format. ठीक है? So tell me, how much is my sales, current sales? Can I say my sales is 360 lakh? ये फैक्टर की अगर आप सर्विस अवेल करो तो क्या सेल्स बढ़ जाएगा क्या?
Are they marketing person? Are they sales person? Or they are just the collecting agents? They will just collect on our behalf. फैक्टर कोई सेल्स बढ़ा के नहीं देगा. सो कैन आई से इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विस, सेल्स वुड रिमेन सेम. इन हाउस में 360 लाख है, वही 360 लाख फैक्टरिंग में भी दिखेगा इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विस. क्लियर एवरीवन टिल हियर? सो फैक्टर डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग योर सेल्स. वो सेल्स मार्केटिंग वालों का काम है. फैक्टर इज जस्ट फॉर हेल्पिंग इन कलेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड इन डेटर्स, फंडिंग द अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड इन डेटर्स. Clear? अच्छा, see in this question they have not given any information on variable cost, fixed cost. कहीं पे भी ऐसा बोला है वेरिएबल कॉस्ट इज 60% और पीवी रेशियो इज 60%, फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 lakh. नो इंफॉर्मेशन एनीवेयर एंड फिक्स्ड कॉस्ट. सो इन अदर वर्ड्स, my sales is only my operating profit in this specific problem. ठीक है, so my operating profit 360. ठीक है. So again, what does this 360 mean? Operating profit if you do in-house collection is 360 lakh. Can I say factoring service avail करो, profit तो बढ़ा के नहीं देने वाला है, because factor is not something that you are granting some credit. Are you following? He is just your collecting agent. So operating profit remains same. Now let's come to admin cost. Check the admin cost. Admin, the firm currently spends 140 on debtors administration. Means अगर मैं इन हाउस कलेक्शन करता हूं तो मुझे एडमिन टीम रखनी पड़ रही है. उसके वजह से टेलीफोन का खर्चा, फैक्स का खर्चा और सैलरी का खर्चा हो रहा है. So can I say if I continue with in-house collection, I need to bear this 1.4 lakh. Everything I am converting into lakhs. अगर मैं इन हाउस प्रोसेस ही कंटिन्यू करता हूं, ये 1,40,000 आई स्टिल नीड टू बेयर. बट इफ आई अवेल द फैक्टरिंग सर्विस, ये 1,40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है, अब फैक्टर की है. सो आई डोंट, फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव, my cost of administration expense will be nil if I avail factoring service. Clear everyone? So admin cost done. Any doubts? Then comes current bad debts loss is 2%. So can I say if I continue with in-house collection, this bad debts loss company has to bear, and bad debts is always on sales. So 360 lakh ka 2% is the bad debts. If company continues in-house collection, 360 into 2%, 7.2 lakh. ठीक है. टेल मी, सोच के बताना, डोंट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन. अगर मैं फैक्टरिंग की सर्विस अवेल करता हूं, डू आई नीड टू बेयर दिस 7.2 lakh? ये बैड डेट्स की जवाबदारी मेरी है कि फैक्टर की है? सर, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फैक्टरिंग. दिस शुड बी योर आंसर. सर, फैक्टरिंग अग्रीमेंट में देखना पड़ेगा कि फैक्टरिंग सर्विस कौन, फैक्टरिंग टाइप कौन सा है, रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है. रिकोर्स हुआ तो सर ये 7.2 लाख आपको ही बेयर करना है. अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अगर नॉन रिकोर्स है देन यू डोंट हैव टू बेयर दिस. ठीक है. सो वी हैव टू चेक द अग्रीमेंट. हियर अग्रीमेंट विल बी योर क्वेश्चन. सी, क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है कि दिस बैड डेट्स लॉस विल बी borne by company or it will be borne by factor or recourse non recourse, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टर्म यूज किए हैं क्वेश्चन में. सो आई टोल्ड यू, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक्स इन द क्वेश्चन, यू अज्यूम की टाइप ऑफ फैक्टरिंग इज नॉन रिकोर्स. नॉन रिकोर्स मीन्स ये बैड डेट्स लॉस की जवाबदारी हमारी नहीं है. क्लियर? स्टैंडर्ड assumption is assuming non-recourse factoring. Again, still we will give clarity at the end by writing a note about it. अगर आपको ये रिकोर्स फैक्टरिंग लेना है तो 7.2 लाख यहां भी माइनस होगा, बिकॉज दैट कॉस्ट आई हैव टू बेयर, कंपनी हैज टू बेयर, मींस कंपनी का बेनिफिट कम हो जाएगा. बट अगेन राइट अ नोट एट द एंड. Clear everyone? But here I am assuming it is a non-recourse because ये standard practical assumption है.
in practical world. COCD, I am ignoring because no specific rate is given. Again, I will write a note at the end about this. Factoring commission. If I continue with in-house collection, why the hell I will pay factoring commission? Factoring की service ही नहीं ले रहा हूँ. So can I say under in-house collection, factoring commission would be nil. ये फैक्टरिंग कमीशन क्या सैलरी दे रहा हूँ 1,40,000 का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहा हूँ सैलरी दे रहा हूँ बट इफ आई अवेल factoring service, yes, then I have to pay factoring fees. And commission is always as a percentage of sales. Huh? So how much is the fees that they are charging? The factor will charge 1% commission. 1% commission means 1% on sales. Okay? So can I say yearly sales is 360 lakh? 1% of that will go as a commission. So it comes to 3.6 lakh. क्लियर एवरीवन कौन सा कॉस्ट कहाँ आएगा वो समझ रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग दिस इज फैक्टरिंग का थोड़ा क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन फैक्टरिंग क्वेश्चंस ओके सो हियर टिल हियर everything is clear about factoring problem. Now the very important part is calculation of interest on advance granted by factor. यहां तक तो चलो फिर भी स्टूडेंट्स मैनेज बट जहां मिस्टेक जहां चांसेस ऑफ एरर्स जहां चांसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अराइव्स इज दिस पार्ट interest calculating interest on advance granted ठीक है so again so that's why I don't solve it in our main format I take the help of working note so that अब हमें क्या समझना है सिर्फ to learn how to calculate interest on advance granted so सिर्फ उतना फोकस करते हैं so working note number 1 calculation of interest on advance granted by factor interest on advance granted by factor okay first of all here factoring is providing us the amount that is blocked in debtors ठीक है so can I say step 1 पहले ये तो जानो debtors में amount कितना blocked है so step 1 here it would remain same calculation of debtors ठीक है बट अगेन आई एम रिपीटिंग अंडर फैक्टरिंग क्वेश्चंस यू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स ठीक है एंड इस क्वेश्चन में तो कहना है इसे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी नहीं है वैसे भी सो आई हैव नो ऑप्शन टू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स बट आई एम सेइंग नॉट जस्ट ऑन दिस क्वेश्चन मान लो कोई और क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है स्टिल यू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स ओनली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिकॉज फैक्टर वाले क्या बोलेंगे सर वी डोंट नो योर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद दैट आपने हमको क्या काम दिया है सेल्स का रिकवरी करना सो फॉर अस डेटर्स इज वैल्यूड ऑन सेल्स क्लियर सो स्टेप 1 पहले जानो डेटर्स में अमाउंट कितना ब्लॉक्ड है सो कैन आई से डेटर्स टू कैलकुलेट डेटर्स it is nothing but credit sales how to find debtors amount ACP divide by 360 assume 360 days in a year इसमें भी बोला है 360 days in a year ठीक है so our average debtors would be can I say sales is 360 lakh average collection period is 30 days divide by 360 कितना आया अमाउंट 360 into 30 divided by 360. A 30 lakhs is the amount that is getting blocked in the debtors. Okay? So this is the funding that I would want from factor because this is the amount that is blocked in the debtors. See, can I say step 1 30 lakhs? Now just visualize. अब मैं जाता हूं फैक्टर के पास हे फैक्टर अमाउंट ब्लॉक्ड इज 30 lakhs. Grant me the advance of 30 lakhs. फैक्टर सेज वेट थोड़ा सब्र करो रुको हमारे बिजनेस में ना सर हम पूरा 30 लाख आपको नहीं दे सकते हम पहले कुछ रिजर्व्स रखेंगे ठीक है रिजर्व्स एज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंसी एट अ पार्ट ऑफ प्रोविजन
हम आपको नहीं जानते. सो फर्स्ट वी विल नॉट ग्रांट यू एंटायर अमाउंट ऑफ 30 लाख एज एन एडवांस. पहले हम इसमें से कुछ रिजर्व्स माइनस करेंगे. ठीक है. एंड हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ reserves that is given? Withholding, they will withhold reserves of 10%. This reserves is just for contingency, just for provision. ठीक है. So factor will say, sir, हमारे धंधे में पहले reserves withhold डिडक्ट करना पड़ता है. ओके, आई से डिडक्ट, देन जो है करो. मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज योर बिजनेस प्रैक्टिस, योर बिजनेस नॉर्म, आई हैव टू फॉलो. सो फर्स्ट वी विल सबट्रैक्ट और वी विल विदहोल्ड रिजर्व्स. ठीक है. एंड हाउ मच इज द रिजर्व्स दैट फैक्टर विल विदहेल्ड? 10%. ये तो कहना है से 30 लाख पे पहले 3 लाख तो ही विल कीप इट एज रिजर्व ओनली, विल नॉट ग्रांट मी एडवांस. यस और नो? Are you following till here, students? Everyone clear till here? ठीक है. So I am telling you, ठीक है, तो grant me advance 27 lakh then. Reserves रखना ही पड़ रहा है आपको. It is your business norm. Keep it. Grant me advance of 27 lakh then. So मैं ऐसा बोलता हूँ 27 लाख दे दो, फिर और तो क्या करूं? सर रुको, थोड़ा और सब्र करो. हमारे धंधे में है ना सर, वी डिडक्ट द कमीशन अप फ्रंट. जो कमीशन होता है ना, वो इसमें से पहले हम डिडक्ट कर लेते हैं. आर यू फॉलोइंग? एंड देन वी ग्रांट यू द नेट एडवांस. देन वी कैन ग्रांट यू द नेट एडवांस. सी, ये बिजनेस प्रैक्टिस है ना, इवन ऑन गोल्ड लोन्स भी होते हैं. मान लो आप यू आर कीपिंग हाइपो लाइक गिरवी पे रख रहे हो आप गोल्ड, एंड यू आर गेटिंग अ गोल्ड लोन अमाउंट बाय स्टॉकिंग. गिरवी में क्या रखा? गोल्ड. तो जनरली नॉट जस्ट बैंक, आई डोंट नो अबाउट बैंक, बट लेट्स से आप कोई इंडिविजुअल के पास गहने गिरवी रखते हो, यू कीप ज्वेलरी इन गिरवी एंड यू गेट अ लोन. So first they will deduct the interest amount and they will give you the net amount as a loan. Are you understanding? तो बहुत सारे बिजनेस में पहले इंटरेस्ट काटा जाता है, ब्याज काट लिया जाता है, एंड देन दे ग्रांट यू द लोन. Typical Marwadi jewelry shop. If you go to any jewelry shop which is owned by Marwadi, jewelry गिरवी रखो, take a loan, but they will first not grant you the entire loan. They will first deduct the ब्याज from it. They will deduct the interest and they will give you the net amount as a loan. Are you following? ब्याज पहले काट लिया जाता है. So again, फैक्टरिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें कमीशन, ये 30 लाख पे जो भी कमीशन बनता है ना, the commission on this 30 lakhs is first deducted. ठीक है. So less commission. How much is the factoring commission? 1%. So on this 30 lakhs, first they deduct 1% commission. So can I say 30 lakh pay? They deduct 1%, means उनका एक महीने का कमीशन बनता है 30,000. दे डिडक्ट इट राइट अप फ्रंट, एंड द नेट अमाउंट इज द एडवांस दैट दे ग्रांट टू यू. ठीक है. अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं. सी अगेन, यहाँ पे भी दो टाइप ऑफ फैक्टर्स है. सम फैक्टर्स विल ग्रांट यू 26,70,000. कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है जो ब्याज भी पहले काट लेंगे, इसमें से ब्याज भी पहले काट लेंगे. जो 30 दिन का ब्याज बनता है ना, वो काट लेंगे, एंड देन दे विल ग्रांट यू द एडवांस. ठीक है. तो सर कितना काटना हो रहा है यहाँ पे? तो हाँ, बट दिस इज हाउ फैक्टरिंग वर्क्स. काटना पड़ेगा. वी हैव टू डिडक्ट दैट. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will calculate the amount blocked in debtors. How much is the amount blocked in debtors? 30 lakh. So I'm saying to the factor, hey factor, give me 30 lakhs. Factor से हाथ पीछे ले लो, अभी 30 लाख नहीं मिलेंगे. First I will withhold the reserve at 10%. Okay, then I'm saying grant me 27 lakh. He's saying again हाथ पीछे ले लो, I will deduct our 1%, जो 30 लाख पे 1% कमीशन बनता है, that I will deduct first. Okay, I'm saying grant me 26,70,000. He is granting me 26,70,000. बट कुछ फैक्टर ऐसे भी है, ही सेइंग सर पीछे वापस ले लो, पहले इस पे जो ब्याज बनता है दैट आल्सो वी विल डिडक्ट एंड ग्रांट यू द नेट एडवांस. ठीक है. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम
Interest is not deducted upfront. ठीक है? So this is the net advance that is granted by factor to the company. And can I say on this net advance, company will pay interest at 15%. Are you following? So therefore, 15% per annum. So therefore, interest comes to 26 lakh 70,000 into 15%. 26 lakh 70,000 into 15%, which comes to 4 lakh 500. 400,500. सर ऊपर तो हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया वो तो 30 दिन का है, 30 into 360 किया। एंड यहाँ पे तो सर आप 15% ले रहे हो, यहाँ पे 30 into 360 नहीं होना चाहिए। ए गो बैक टू आवर ओरिजिनल लॉजिक, मैंने समझाया था ना, ये एक महीने का है। दैट इंटू 330 डिवाइड बाई 360 इफ यू डू दैट इज फॉर 1 मंथ। बट हम जो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज पर एनम ईयरली इंटरेस्ट। सो याद करो लॉजिक, ये 6 महीने में इंटू 330 डिवाइड बाई 360 इज करेक्ट। बट सेम स्टोरी विल रिपीट इन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल डिसम्बर। ऐसा ना, सो डायरेक्टली आई हैव अप्लाइड पर एनम रेट। Are you following? I'm not preparing that long table, that complicated timeline वगैरह. Here that same logic. Understood? So that's why I'm applying it with per in I'm interested. Understood? So interest on advance granted. See, हमें advance granted का amount नहीं लिखना है ऊपर फॉर्मेट में, इंटरेस्ट का एक्सपेंस लिखना है। तो कैन आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस कम्स टू 4,500,000 एनुअली। ठीक है? So my net benefit comes to how much rupees? 360 lakh minus 1.4 minus 7.2, 351.4 lakh. ठीक है? If I do in-house collection, it is 351.4 lakh. But if I avail the factoring service, so it is 360 lakh minus, ये सारा लैक्स में लिखा है ना, तो इसको भी मैं लैक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। 4,500,000 इज नथिंग बट 4.005 lakh। ठीक है? माइनस 3.6 माइनस 4.005, 352.395 lakh। ठीक है? So can I say net benefit is coming more if we avail factoring service? Yes or no? So company should avail the factoring service and stop the in-house collection. Understood everyone? Let's see मॉड्यूल का डिसीजन ICAI मॉड्यूल में क्या आ रहा है। Since the savings exceeds the cost, the proposal is accepted. It means proposal कौन सा accepted? Factoring वाला proposal is accepted. Even if their answer is coming, company should go for factoring proposal. ठीक है? But sir उनका आंसर तो 99,500 कुछ आ रहा है। What they have done, you know? See, हमने क्या किया? हमने net benefit total ढूंढा। उन्होंने क्या किया? They have just compared the cost. कॉस्ट मीन्स व्हाट देव अज्यूम, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दोनों सेम ही है ना। सो इसमें देयर इज नथिंग लाइक एक्स्ट्रा दैट वी हैव अर्निंग फ्रॉम फैक्टरिंग। ठीक है? ये तो सेम ही है, तो यू जस्ट कंपेयर द कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग? इन हाउस कलेक्शन में कॉस्ट कितना वो कंपेयर करो, फैक्टरिंग में कॉस्ट कितना, यू जस्ट कंपेयर दैट कॉस्ट, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रिमेनिंग सेम। सो व्हाई टू कंपेयर दैट? जिसमें डिफरेंस आ रहा है, कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, सो यू कंपेयर दैट एंड डिसाइड। आर यू फॉलोइंग? बट आंसर अल्टीमेटली, डिसीजन अल्टीमेटली वही आएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू जस्ट कंपेयर द इन हाउस कॉस्ट एंड द कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग इन फैक्टरिंग। सिर्फ कॉस्ट कंपेयर करो तो कैन आई से इन हाउस, इफ वी कंटिन्यू इन हाउस कलेक्शन, आवर कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगर हम इन हाउस कलेक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट इज
8,60,000, ठीक है। अगर वी डू इन हाउस कलेक्शन, अगर वी अवेल फैक्टरिंग सर्विसेज, तो हाउ मच इज आर टोटल कॉस्ट? So it is nothing but sir 3,60,000 plus 4,005,000. सर उसमें कॉस्ट 7,60,500 आ रहा है, ठीक है। सो अगेन इफ वी जस्ट कंपेयर द कॉस्ट, कैन आई से मेरा डिसीजन मेकिंग स्टिल फैक्टरिंग आ रहा है? ये बिकॉज प्रॉफिट इन आइदर केस इज सेम, it is 360 lakh, 360 lakh. If you just compare the cost, again answer is same. If we just compare net benefit, तो कहना इसे इसमें 351.4 आ रहा था एंड इसमें 352.395 आ रहा था। अंडरस्टूड? वी कंपेयर दिस नेट बेनिफिट अमाउंट। इफ वी कंपेयर द कॉस्ट, वी इग्नोर द प्रॉफिट बिकॉज इट इज सेम, स्टिल फैक्टरिंग ही आएगा बिकॉज कॉस्ट इज लेस इन फैक्टरिंग। बट सर उनका तो आंसर स्टिल 99,500 आ रहा है। व्हाट हैव दे डन इज दे हैव कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटल बेनिफिट। आर यू फॉलोइंग? इफ वी कंटिन्यू इन हाउस कलेक्शन, कैन आई से आर बेनिफिट इज 351.4 ही था ना, 351 पॉइंट कितना था, 4 लाख, यस। सो इफ वी कंटिन्यू इन हाउस कलेक्शन, द नेट बेनिफिट इज 351.4 lakh. But if we avail factoring service, can I say our net benefit came to 352.95 lakh? ये तो फैक्टरिंग के पास जाने से एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हो रहा है? कैन आई से 352.395 minus 351.4. Extra benefit is 0.9950 lakhs. That is nothing but 99,500. So they have calculated incremental net benefit. Are you following? But again आंसर तो सेम ही आएगा। ये फैक्टरिंग के पास जाने से फायदा हो रहा है, सो दे हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल कि भाई फैक्टरिंग के पास जाने से कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है, तो एक्सेप्ट द फैक्टरिंग प्रपोजल। अंडरस्टूड? सो एनी विच वेज, if you just compare the cost, still you will get the answer of factoring. If you compare the net benefit, still you will get the answer of factoring. If you compare the incremental benefit means factoring के पास जाने से 99,500 का ज्यादा फायदा होगा कंपनी को, तो जाओ भाई उसके पास, ज्यादा फायदा हो रहा है तो। क्लियर? इन दैट केस अगेन फैक्टरिंग। अच्छा, इफ यू जस्ट कंपेयर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, can I say 8,60,000 was our cost if we do in-house collection? बट अगर फैक्टरिंग के पास जाते हैं तो ये कॉस्ट 860 का सीधा हो जाता है 760,500, तो 99,500 के कॉस्ट की बचत हो रही है। कॉस्ट में बचत मींस फायदा, सो फैक्टरिंग के पास जाने से फायदा हो रहा है 99,500। वॉट एवर वे you want to reach at Delhi, you reach, but ultimately you have to reach at Delhi station. Clear? कोई भी फॉर्मेट, कोई भी वे यू अप्लाई, ultimately you will reach at the conclusion of factoring service should be availed. ठीक है? So again I am repeating, way of solving might be different, conclusion will come same. ठीक है? Everyone understood? So this is all about factoring. Understood how factoring questions has to be approached? Clear everyone? Now very important, see, just to add complexity in your life, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। मान लो सीओसीडी होता, तो कहना है से हम सीओसीडी इन हाउस कलेक्शन के लिए हमारा नॉर्मल टेक्निक, हमने जो स्टेप 2 सीखा था वो फॉलो करेंगे। कैलकुलेट डेटर्स, अप्लाई सीओसीडी, ठीक है, फॉर इन हाउस कलेक्शन। अगर सीओसीडी रेट स्पेसिफिकली दिया होता तो, ठीक है, तो सीओसीडी इन हाउस में आता बिकॉज वी वुड हैव नॉट टेकन एडवांस फ्रॉम फैक्टर, तो उसके लिए हम 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते, कैलकुलेट डेटर्स। अब क्वेश्चन आता कि सर डेटर्स सेल्स पे करने का कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करने का। सो इफ अगेन आई विल एडवाइस, इफ इट इज फैक्टरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू वैल्यू डेटर्स ऑन सेल्स, ठीक है, सो दैट वो कंपेरेबल रहे। बिकॉज कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ सीओसीडी पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे and to calculate interest on advance granted, you will take debtors on sales,
तो कंपेरेबल नहीं बनेगा, बिकॉज फॉर इन हाउस यू आर टेकिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, फॉर फैक्टरिंग you are taking, you are valuing debtors on sale, so it won't be comparable. So to make it comparable, even for COCD, if it is a factoring question, you value debtors on sales. ठीक है? So COCD calculate करने के लिए follow two step process. तो COCD इन हाउस में आ जाएगा. फैक्टरिंग के लिए कहना है हम दूसरी बैंक के पास तो नहीं जा रहे, हम सारा एडवांस फैक्टर से ले रहे हैं. सो कहना है से आइडियली COCD अमाउंट शुड नॉट कम इफ वी आर अवेलिंग फैक्टरिंग सर्विस. वाई? COCD कब आता है? जब हम दूसरी बैंक से या खुद के पैसे लगाते तो. बट यहाँ तो हम फैक्टर से पैसे ले रहे हैं, तो फैक्टर इज ग्रांटिंग एडवांस, उसके सामने हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सारे पैसा तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया है. So ideally, COCD should not come if we avail factoring service. But मैं बोल रहा हूँ आएगा. Let me add some complexity in your life. I am saying कुछ ऐसा अमाउंट है which is still not funded by the factor. हमें बाहर से ही अरेंज करने हैं. So to that extent, we have to apply COCD rate. Understood what is my point? There is some amount which is still not funded by the factor. So that amount we still have to manage from some other banks, from some other financial institution, or from our own pocket. So to that extent, to the extent of funds which are not financed by factor, COCD will come. Clear? अब वो कौन सा amount है? तो come to the working note over here. See, this is the working note. हमें कितना चाहिए था फैक्टर से? द अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स. हाउ मच इज द अमाउंट दैट इज ब्लॉक्ड इन डेटर्स फॉर अस? 30 lakhs. सो द फंडेड फ्रॉम फैक्टर वाज 30 lakhs. हमने हाथ फैलाए थे 30 lakhs के लिए, बट अल्टीमेटली उसने 2 बार हाथ पीछे किए. नहीं, पीछे जाओ, दूसरी बार पीछे जाओ. अल्टीमेटली कहना है ग्रांटेड एडवांस ऑफ 26,70,000. 70, yes, correct. So can I say he didn't fund us for these reserves, neither he funded us for this commission. Are you following? So ye 3,30,000 is the unfunded amount from factor. तो ये हमें बाहर से अरेंज करना पड़ेगा. Following? So to the extent of 3,30,000 which is not funded by factor, COCD will apply, because ये either we will invest our own funds और हम दूसरे बैंक से ये पैसा लाएंगे. हमें चाहिए था 30 लाख, हमने हाथ फैलाए थे 30 लाख के लिए. अल्टीमेटली फैक्टर ने हमें 26,70,000 का फंडिंग दिया. क्लियर एवरीवन? सो स्टिल ₹3,30,000 is not funded by the factor. Clear? 3,30,000 is not funded by factor. ये 3,30,000 कैसे आया? तो 3 लाख तो उसने रिजर्व्स का काट लिया, वो हमें बाहर से लाना पड़ेगा, और कमीशन का अमाउंट उसने जो काटा था ना, वो भी बाहर से लाना पड़ेगा. ठीक है? सो दिस हैज टू बी फंडेड बाय आइदर investing our own funds or from borrowings from some other banks. ठीक है? अदर बैंक्स या दूसरे कोई फैक्टर के पास चले जाओ, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाओ. ठीक है? फ्रॉम सम अदर बैंक्स. क्लियर? सो इन दैट केस कैन आई से इवन इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विसेज, 3,30,000 ऐसा अमाउंट है जिसपे हमें COCD अप्लाई करना पड़ेगा. सो 330 पे वी विल अप्लाई COCD रेट फॉर इवन इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस. हाँ, इन हाउस के लिए तो पूरा 30 लाख फंडिंग करना है. इन हाउस के लिए तो हम फैक्टर के पास से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो बैंक से ही लेना है या खुद के पैसे डालना है. क्लियर? सो इन दैट केस इन हाउस के लिए यू हैव टू अप्लाई COCD rate on entire 30 lakhs. Clear everyone? But I have ignored here in this question because COCD rate was not given. तो इतनी unnecessary complexity क्यों create करूं आपके लिए? ठीक है? So that's why I ignored COCD completely in this question, because specific rate was not given. Understood? If you want to assume COCD
at 15% in current question, तो आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। सो आंसर क्या होता, इफ वी अवेल फैक्टरिंग सर्विस, तो फैक्टरिंग सर्विस में आपको या सीओसीडी अब इग्नोर नहीं करना है, लेना है, ठीक है। तो यहाँ 3,30,000 पे 15% आएगा, ठीक है। बिकॉज 3,30,000 यू हैव टू फंड इट फ्रॉम आउटसाइड, एंड ईयर पूरे 30 लाख पे 15%। क्लियर? इफ सीओसीडी रेट इज अज्यूम टू बी 15%, but since no specific rate is given, I am completely ignoring this complexity. Clear, everyone? So I will write a note at the end about this. दो नोट लिखनी थी ना। नोट नंबर 1, in absence of specific COCD rate, it is completely ignored. It is completely ignored, ठीक है। दूसरी और एक नोट, debtors are valued on sales. Understood? In factoring kind of questions, debtors are valued on sales. Clear till here? So this is all about factoring. So the important point was to calculate, to understand how to calculate interest on advance. So again, step 1, एक ही step में सारा complete हो जाएगा. Step 1, calculate debtors. That is the amount that you need from the factor. But factor दो बार पीछे भेज रहा है आपको, पीछे हटा रहा है. 1 by withholding reserves, second by deducting commission. कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो 3 बार आपको भगा देंगे, इसमें इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे. क्लियर? So this is how you calculate interest on advance granted by factor on per annum basis. Again, the final ultimate decision came same, that the best for the company is availing factoring proposal, factoring service. Be it you just compare the cost, be it you just compare the net benefit, be it you just compare the incremental net benefit, or be it you just compare the incremental savings in cost. चारों प्रोसेस में, चारों मेथड में आंसर विल बी सेम. फिर आई एक्सप्लेन यू कि कुछ ऐसे फंड्स है, there is some unfunded amount by factor. तो कौन सा है? the amount of commission and the amount of reserves that he has granted. तो कहने से वो फंड्स हमें मैनेज करने पड़ेंगे कहीं और से. So for that extent, only to that extent, COCD percentage will be applied if we avail factoring service. In-house जाते तो पूरे amount पे you have to apply COCD rate. Clear till here? Evaluate that if you would have continued with in-house collection, net benefit कितना होता? And in-house collection में नहीं जाते, factoring service avail करते, तो net benefit कितना होता? Clear everyone? That comparison of net benefit is nothing but evaluation of factoring proposal. ठीक है? Now there is one more small theoretical concept called forfeiting. This is a theoretical concept that is covered under receivables management. So let's understand that. Forfeit of rights, ऐसे सब टर्म्स आपने आई गेस लॉ में सुना होगा, इवन इन टैक्सेशन सुना होगा, कैपिटल गेन्स में. Forfeiting means relinquishing your right. Capital gains में I guess you would have heard this term, relinquishment of rights, extinguishment of rights. Means आपका हक जाने देना, that is forfeiting. आपका कुछ हक है उसको जाने देना, that is relinquishing. So what is forfeiting? First of all, forfeiting will come under
only when there is international transactions happening. Domestic transactions में इसको हम bill discounting बोलते हैं in simple terms. But forfeiting is nothing but bill discounting in international marketing. ठीक है? In export business. So first of all, forfeiting will come in international transactions. By international transaction, I mean import-export business में. It is international version of bill discounting. ऐसा simple terms, layman terms, loose terms में समझो. It is international version of bill discounting. ठीक है? International transaction of import-export. Okay, so let's just understand in a very simple language. Let's say there is an exporter based in India. हम exporter है. We are based in India. ठीक है? And there is an importer, John Cena, based in USA. ठीक है? So we sold goods to John Cena in USA. So his importer, we are exporter. From his perspective, we have sold goods. So from Indian law perspective, we are exporter and the counterparty is importer. ठीक है? So let's say it is the goods are worth rupees 20 lakhs. ठीक है? And students, even in international market, you have to grant certain period of credit. उल्टा इंटरनेशनल मार्केट में तो ज्यादा क्रेडिट देनी पड़ती है. मान लो यही गुड्स आप डोमेस्टिक में बेचो तो 30 दिन इज द जनरल नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स. बट इंटरनेशनल में बेच रहे हो तो 60-70 डेज का क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज शिपिंग का भी टाइम होगा ना. Understood? So in international market, the credit periods are generally higher than domestic market. So let's say credit period is 90 days. ठीक है? So can I say importer has to pay me 20 lakhs after 90 days? Correct? Hey, but again, I cannot afford to block even a single penny for a single day. 1 रुपया भी अमाउंट ब्लॉक रहे बिजनेस में इवन फॉर अ सिंगल डे इज अनहेल्दी फॉर माई कंपनी. माई कंपनी विल गेट द फीवर. बीमार पड़ जाएगी मेरी कंपनी इफ 1 रुपी इज ब्लॉक फॉर अ सिंगल डे. तो मैं कहा जाता हूं, आई विल दौड़ते दौड़ते आई विल रश टू माई बैंक. लेट्स से माई बैंक इज ICICI. I will rush to him and I will request him, hi, hey ICICI, my amount is getting blocked for 90 days. 20 lakhs का export किया है. I need the fund today, but the importer will pay me 90 days. So ICICI says, I have one option. We have one product called letter of credit. ठीक है? तो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपके इंपोर्टर से, फ्रॉम योर इंपोर्टर यू गेट लेटर ऑफ क्रेडिट. टेल योर इंपोर्टर, कॉल योर इंपोर्टर के हे इंपोर्टर जॉन सीना, गिव मी लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड बेस्ड ऑन दैट लेटर ऑफ क्रेडिट यू ब्रिंग दैट लेटर ऑफ क्रेडिट टू अस टुडे. वी विल गिव यू द अमाउंट ऑफ योर सेल्स. ठीक है? हाँ, कुछ फीस कमीशन काट लेते हैं, बट कैन आई से 20 lakhs आफ्टर डिडक्टिंग द फीस एंड कमीशन यू गेट टुडे इटसेल्फ. तो कैन आई से आपने एज एन एक्सपोर्टर हक किसको दे दिया? ICICI बैंक को. के हे ICICI, नाउ आफ्टर 90 days यू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम जॉन सीना. आई रेलिंक्विश माई राइट टू यू. अरे फॉलोइंग, मैं मेरा हक आपको दे देता हूं. कौन सा हक? कलेक्शन का हक. किससे कलेक्शन का हक? इंपोर्टर से. कितने दिन बाद? 90 डेज के बाद. ठीक है? सो नाउ माई हक इज टू यू, बट यू ग्रांट मी टुडे एडवांस. यस और नो? हाँ, they will not grant entire 20 lakh. They will deduct some amount of fees, amount of commission. But can I say आपको आज की आज पैसा मिल गया? Are you understanding? So this is how letter of credit works in international market. ठीक है? So as an exporter, I will ask, I will call to my import letter of credit. But importer अपने letter head पे letter of credit नहीं बनाएगा. He will go to his bank. Bank issues the letter of credit. ठीक है? He will go to his, let's say, Bank of America.
So John Cena goes to his bank and asks for issuing letter of credit to me. ठीक है. So John Cena will request to Bank of America, hey Bank of America, can you issue letter of credit to my supplier based in India. ठीक है. On my behalf. ठीक है. So bank will check his history. John Cena की history check करेगा. हाँ, Bank of America and John Cena is a good relation. John Cena ने timely सब payment किया है, and based on the trust of John Cena, बैंक ऑफ अमेरिका ग्रांट्स लेटर ऑफ क्रेडिट टू एक्सपोर्टर. वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर लेके उसके बैंक के पास आता है, आईसीआईसीआई के पास. आईसीआईसीआई ग्रांट्स हिम 20 लाख, not 20 lakh but some commission. After deducting some commission, after deducting some fees, he will grant today itself. ये 20 लाख तो नहीं तो 19 लाख तो आज के आज ही दे देगा. क्लियर. एंड आफ्टर 90 days क्या होगा? कैन आई से जॉन सीना ideally has to pay to the exporter, but exporter has relinquished, has forfeit his right, has done the forfeiting. So can I say he will pay to the ICICI bank 20 lakh. Clear? This is what is the concept of forfeiting. Exporter relinquishing his right of collection from importer to its bank. Clear everyone? So that is transaction of forfeiting. Okay. If you want to understand in more detail, मैंने जो समझा है वही है, but you can read this concept. Forfeiting, it is nothing but relinquishing a right. Clear? It is a type of bill discounting, but at international level, at international market. ठीक है. Importer opens a letter of credit in favor of exporter. Understanding? And exporter वो letter of credit लेके अपनी बैंक के पास जाता है. So you can read this concept that, but I hope it is clear to all the students. Okay, so with this, let's end today's session. And I hope even today's session have created some value in your academic life, in your FM life. Thank you all. Thank you, tech team. Let's end today's session.